Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Pakistan Experience. Battle lines have been drawn. Nayab had something come up, so she couldn't be here. तो इसलिए हम अब आज मेरे ख्याल से उज़ैर हम बिलाल को मौका देते हैं. आज इन डिफेंस ऑफ पीटीआई एक पॉडकास्ट हो जाए. आज बिलाल से आप स्टार्ट करें, लेकिन मुझे लगता है नयाब ने लगता है हमारे टेक्स्ट मैसेज साजिश का उनको अंधिया हो गया था कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ क्या होना है. पीपल्स पार्टी वाले उसने लगता है जीएसके वाली स्टोरी आज की पढ़ी और कहा कि बेहतर यही है कि पॉडकास्ट पे ना आया. वाज नॉट अ बिग डील, बट बिल्कुल हाँ, आपने और मैं जो लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि एक फालतू की रेड है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके ऑप्टिक्स के लिए आपने एक रेड मार दी, वही हुआ. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द न्यूज़ रिपोर्ट शोज. सो बिलाल, आज लेट यू सेट द सीन फॉर अस. आपका यूथ एक्सूबरेंस बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है ऑडियो लीक के बाद? लेट्स गेट अ गेज ऑफ वेयर यू आर. Gauge of where I am is very simple. I think there should be an election as soon as possible and the chip should fall where they do. I think ये PTI की core demand है. It is a very democratic way to go about pushing for what they're pushing. वो एक backroom deal जिस तरह PDM ने करी थी to shake the allies and come into power. That is not the approach that they're taking. They're like, आप एक public election call करें. Let there be a free and fair election and let the chips fall. I love how PTI supporters decide where history starts. They decide भाई इस मौके से हिस्ट्री शुरू हुई है, इसके पीछे हमें कुछ भी नहीं पता. आप खुद तो तस्लीम कर चुके हैं कि 2018 में बैकरूम डील के तहत ही आए थे खान साहब. यार उसके ऊपर भी जो मैंने आपको तब भी समझाया था कि वो गवर्नमेंट उतनी ही सिलेक्टेड थी जितनी एवरी अदर प्रीवियस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दिस वन वाज सिलेक्टेड. द आइडिया इज कि आपने उनका जो एक्चुअल पॉपुलर सपोर्ट था उसको भी जेन्युइनली डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करी विद दिस सिलेक्टेड वाली चीज. नाउ यू आर सीइंग दैट द पीटीआई इज इन direct confrontation with the establishment and they continue to be popular. बिलाल खान साहब ने पिछले हफ्ते खुद ही अपने रिमार्क्स में कहा है सच मैं बोल नहीं सकता, झूठ बोला नहीं जाता, और उसके अगले दिन उन्होंने कहा है कि जब नेगोशिएशंस चल रही हो तो ऐसी बातें ओपनली नहीं करनी चाहिए. तो नेगोशिएशंस तो चल रही है, तो खुला, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, खुला ओपन सीक्रेट है कि बातचीत चल रही है और खान साहब खुद मिले हैं बाजवा साहब से. हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बातचीत जिस एलिमेंट पे हो रही है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. वो जिस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जो उन्होंने पब्लिकली कहा है, क्योंकि वो पीडीएम से भी और किसी चीज के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस एक इशू पे विच इज हैविंग इन इलेक्शंस, ही इज ओपन फॉर इट and he is actively discussing it and this is healthy for our democracy. We all call ourselves Democrats. अगर आपको इलेक्शन करवाना है और उसके थ्रू आप एक पॉपुलर मैंडेट के थ्रू वर्सेस एक जिस पार्लियामेंट को आपने 4 साल से कहा था कि ये लेजिटिमेट है ही नहीं, और फिर उसी के अंदर बैठ के आपने एक इलेक्शन करवा के अपने आप को बोल दिया कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है फ्रॉम दिस पार्लियामेंट और पिछली वाली गवर्नमेंट इलेजिटिमेट और उसी पार्लियामान से पीटीआई ने इस्तीफे दिए और अब कोर्ट में कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफे प्रेशरिंग के लिए दिए थे, आप एक्सेप्ट ना करें हमारे इस्तीफे. बिलाल अच्छा एक करके चलते हैं. छह बातें आप कह देते हैं और वो सब पे सवालिया निशान होता है. आपकी एक शिकायत है कि जी खान साहब की डिलेजिटिमाइज की सिलेक्टेड कहकर 2013 में तो धरना दिया गया था, अटैक किया गया था, तो फिर उसको भी तनकीद करें कि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट 2013 में आई थी. बाय ऑल मेट्रिक्स द 2013 इलेक्शंस वर अ लॉट मोर फ्री एंड फेयर देन 2018. ये तो अनडिनाइबल सी बात होगी ना. ये कहना कि सब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ आते हैं, वो नुआंस चली जाती है उससे. हाँ ऑफ कोर्स जब जरदारी की गवर्नमेंट भी आई थी, ऑफ कोर्स एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ एग्रीमेंट हुई थी. 2013 में प्रोबेबली अगर पिछले 3 इलेक्शंस कंपेयर करें, आई वुड से 2013 सबसे फेयर है. उसमें पार्लियामेंट अटैक की गई, धरना दिया गया, फिर भी जो डेमोक्रेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज थी दे ब्रॉट इमरान खान बैक इनटू द फोल्ड. आप कह रहे हैं कि उनको सिलेक्टेड बोल दिया तो वो नाराज हो गए. सीधे एक सवाल पूछ लेता हूँ, इलेक्शन लेते मैं कल करवा दूं, ठीक है, एक तो पूरा सिंध अंडर वाटर है, पता नहीं इलेक्शंस होंगे कैसे, खान साहब एक्सपेक्ट करें स्वयं करके जाएंगे. इफ खान साहब लूजेस विल ही एक्सेप्ट द रिजल्ट? I think if the elections are free and fair, he should accept the results. But वो free and fair होंगे ही नहीं ना. अगर खान साहब हार गए तो इन खान साहब mind will they be free and fair? So I think कि और जिस पार्टी, सॉरी टू इंटरप्ट, जिस पार्टी से वो नेगोशिएट कर रहे हैं बकौल आपके टू हैव अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
उस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 75 इयर्स ऑफ हिस्ट्री में तो बड़ा क्लियर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो पार्टी गारंटी तो करती होगी, लेकिन फिर होते नहीं है। तो जिससे वो निगोशिएट कर रहे हैं वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना जबरदस्त नहीं है। हाँ, So, लेकिन I आपने mean, ये बात करी ना कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स खान साहब के तो क्वेश्चन मार्क है। ये जो आइडिया है कि वो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने के लिए बातें कर रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, खुदा का खौफ कर ले बिलाल। आई वो थिंक इलेक्शन चाह रहे हैं ताकि वो जीत जाएं, वो हार गए तो वो इलेक्शन नहीं मानेंगे और वो फिर धरने देंगे। I think that's a very political and democratic thing to do, to say कि आपके इलेक्शन होने चाहिए and let Then there why be did a he winner call and for a an loser. election when before the vote of no confidence was moved against him? उससे जब ये लोग भी तो डिमांड कर रहे थे ना इलेक्शन। that is such a ridiculous proposition. आप जब एक गवर्नमेंट में हैं and you've got the majority, why would you call, if the PDM called for an election versus doing a backdoor deal and continue doing that, जिस तरह अभी PTI is in that position जहां वो इधर इलेक्शन कॉल से कर सकते हैं, या वो उन्होंने आर्मी के ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है कि दे राइट नाउ पुल फॉर अनदर बैकडोर डील एंड से कि अभी आप इसी गवर्नमेंट को टॉपल करें। The opposition asking for an election against a coalition government is ridiculous when PDM does it, but when PTI does it against a democratically elected उतनी ही जितनी 2018 की थी ऑन पेपर उतनी ही है, वही कोalition है, वो आप कहते हैं कि ये तो एक डेमोक्रेटिक डिमांड है। वो जब करते हैं वो आप कहते हैं ये तो रिडिकुलस डिमांड है। फर्क क्या है दोनों चीजों में? फर्क ये है कि जब ये प्रेशर बिल्ड करने के बाद इन द एंड द एक्चुअल डील दैट द पीडीएम डिड वाज ए बैकडोर डील कि आप पार्लियामेंट के आर्मी प्लीज आप इनके एलाइज हटाएं एमक्यूएम और उनको बोलें कि ये इनको डी सपोर्ट करें और हम लोगों को भाई तो वो आने तो दें सपोर्ट किसने किया था? वो पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई किसने थी? उन्होंने ही बनाई थी ना। आप कहते हैं जी आर्मी हमसे हाथ उठा लिया उन्होंने, भाई तो हाथ भी तो उन्होंने ही लगाया था। एमक्यूएम और मैं आपको एमआईक्यू को यही किसने खान आर्ग्यूमेंट साहब की गोदी में दिया था? व्हाई डिड खान साहब इन 3 years नॉट डू एनीथिंग टू स्ट्रेंथन हिज कोएलिशंस एंड हिज एलाइज? He did nothing. वो लिटरली टीवी पे जाके उन्होंने बोला नैपियां तक ये बदलवाते थे। खान साहब हिमसेल्फ एडमिटेड कि फोन कॉल करवानी पड़ती थी बिल्स के लिए। ये कोई डेमोक्रेसी है? ये उन्होंने कुछ मैं टकी आपको की स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट नहीं की बोल रहा हूँ ना डेमोक्रेसी। कि हाँ, यही मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि देखो बात तो दोनों नहीं करी ना आर्मी चीफ से, अभी इमरान खान भी कर रहे हैं, पहले उन्होंने भी करी, लेकिन जो इमरान खान अपनी जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन कॉल करें, आप ये गवर्नमेंट हटा के मुझे इस गवर्नमेंट को जो है मुझे नहीं आना, आई वॉन्ट एन इलेक्शन, आई वॉन्ट कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो एंड आई वॉन्ट द चिप्स टू फॉल वेयर दे आर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन PDM has historically, PMLN, PPP has always cut backdoor deals so that they do not need a popular mandate. आप इसकी एक ऑडियो टेप से मैं एक आखिरी चीज लिंक कर दूं and I want to let Uzair and you talk, otherwise this is going to become a 2 versus 1 deal, which is के ऑडियो लीक्स में भी अगर आप, साथ मुझे तो आज ये भी नहीं पता। हम ब्लैक एंड व्हाइट फड्डा कर रहे हैं, बिलाल उजैर जो है न्यूट्रल बन रहे हैं। मैं तो होस्ट हूं भाई पाकिस्तान एक्सपीरियंस का। It's very emblematic of the Pakistani discourse by the way कि PMLN और PPP जो हैं वो भाग जाएं और in the end वो जो है न्यूट्रल्स और PTI की लड़ाई होते जाए। मतलब it's very emblematic this podcast of the reality। लेकिन अगर आप ऑडियो टेप्स भी देखें, It baffles my mind every single time। एक पीटीआई जो पार्टी बनी है, जो एक्नॉलेज किताबों में लिखा हुआ है, वो कहते हैं हमने बनाई, हमने सपोर्ट किया, हमने पाली, अब वो खुद कह रहे हैं हमने किया, एंड देन यू आर लाइक पीटीआई डेमोक्रेटिक पार्टी है, बाकी लोग बैकरूम डील करते हैं। an oversimplification, this is such an oversimplification। आपने उसकी 22 साल की स्ट्रगल को अगर उसको डील करनी होती तो वो मुशर्रफ के टाइम पे ही प्राइम मिनिस्टर बन जाता। होने वाली थी किताबें पढ़ लिया कर बिलाल। एक्सेप्ट किया ना, उसने नहीं एक्सेप्ट की, उसने नहीं एक्सेप्ट की till the establishment went anti मुशर्रफ and then इमरान खान went anti मुशर्रफ। अभी भी वो जो कहते हैं 30 साल में बर्बाद किया है, मुशर्रफ का नाम नहीं आता, सिर्फ इतना आता है कि जी इन्होंने वो बंदे भेज दिए, वो तालिबान प्रो है ना हमारा बेंट एस्टैब्लिशमेंट का, बट ही डजंट से मुशर्रफ की इकोनॉमिक पॉलिसी। आप ये बता दें कि आज एनी मेन स्ट्रीम पार्टी, चाहे शहबाज शरीफ की तो इतनी अभी गट्स नहीं है, पूरी पीडीएम की इतनी गट्स नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो आपकी एजेंसीज ने, मैं आपकी पॉडकास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नाम नहीं ले रहा उस एजेंसी का, लेकिन एजेंसीज ने हैक करा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उसको लीक किया। प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ ये तक नहीं कर सकता आपके सिविलियन डेमोक्रेसी के वो अलमबरदार कि उसको इन्वेस्टिगेट करें और पब्लिकली उसको ट्रांसपेरेंट। खान साहब ने क्या बोला था जब मंसूर अली खान ने पूछा था? खान साहब ने क्या बोला था जब मंसूर अली खान ने पूछा था? बिलाल प्लीज मुझे बताएं, जब खान साहब से पूछा गया था आईएसआई टैप करती है, खान साहब का क्या रिप्लाई था?
सब कुछ पता होता है, क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा। IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि हाँ वो सब कुछ जानते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, ये तो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, करते हैं जब आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो वो टैप कर ले, इसमें कौन तो सी वो बड़ी उस बात वक्त इंकरेज कर रहे थे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टैप करना। अब योर क्रिटिसिज्म ऑफ शहबाज शरीफ इज कि देखो स्पाइनलेस है, वो तो सबको पता है स्पाइनलेस है, लेकिन खान साहब तो उनसे 2 दर्जे आगे थे ना। बाय कंपैरिजन हिम नॉट नेमिंग एजेंसीज इज लेस वर्स देन खान साहब सेइंग दे डू अ वेरी गुड जॉब टैपिंग दिस, दे शुड टैप इवन मोर। भाई इससे कैन आई चाइम इन, बिकॉज़ आई थिंक ये तो वही हम विल कीप गोइंग इन राउंड अबाउट वेज। लेकिन एक सवाल पे बिलाल आपने मुझे चैट पे भी जवाब नहीं दिया था, तो मैं आज इस पे पूछ लेता हूँ कि आप राइटफुली सो एंड वी एग्रीड ऑन दिस लास्ट टाइम वी चैटेड ऑन दिस पॉडकास्ट के टीयर गैसिंग, लाठी चार्ज, ये सारी चीजें फैशिज्म की अलामत हैं और हक है लोगों का प्रोटेस्ट करना। तो 2 दिन पहले पेशावर में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि क्या हो रहा था, तो आपने उस पर कमेंट नहीं किया, पब्लिकली भी, ट्वीट पे भी, हालांकि आप बड़ा एक्टिव थे उससे पहले जब इस्लामाबाद में ये कंडेमनेबल चीजें हो रही थी। तो why were you silent all this while, and what do you think about Peshawar police using tear gas and lathi charge on people? हलाल नहीं, fascism. चले Is मैं that fascism in KP or no? चले मैं इस पब्लिक फोरम पे कह देता हूँ वर्सेस अ प्राइवेट व्हाट्सएप कि आई कंडेम दैट एंड आई थिंक कि चाहे PTI गवर्नमेंट करे या चाहे PDM गवर्नमेंट करे, इफ यू आर टीयर गैसिंग योर ओन सिविलियंस, दैट इज रॉन्ग. Is it fascism in KP or no? It is the F word is a delicate word that I want to use, but if you want to use that I would say fascist tendencies हैं. The reason why I say the F word is careful क्योंकि शहजाद मैंने particularly आपका देखा है कि PTI की एक random ट्विटर पे भी अगर कोई बंदा जो है वो कुछ गालियां रैंडम ट्विटर पे जिसके 70,000 फॉलोअर्स हो और तो वो आप जो PTI की है सोशल मीडिया की टीम का हिस्सा हो, पूरी पार्टी को आप फैशिस्ट ब्रांड कर देंगे, जबकि जो PMLN वालों की जो मेरी गाली आती है बाय पीपल फॉलोड बाय मरियम नवाज, बाय द वे, इट्स जो एफर्ट का जो मुझे जनरली एक मसला है और ये मुझे अमेरिका में भी मसला है कि आप फैशिज्म से एक जो you know any coalition of like 50% of the population has fringes as well, आप उस फ्रिंज को लेके जब आप पूरे 50% को अच्छा इस पे Bilal, let me first, but since मुझ पे अटैक है, let me let the record straight. I feel कि मॉडल टाउन मैसेकर जो हुआ था उसमें राना सनाउल्लाह की इन्वॉल्वमेंट थी, PMLN की सीनियर लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी, उस पे उन लोगों को जेल जाना चाहिए था। वो फैशिज्म का एक गलीज चेहरा है। तो जिन लोगों को मैं पटवारी लगता हूँ ना, ये सुन लें आप लोग। फिर जिन लोगों को मैं जियाला लगता हूँ, नाजिम जोकियों का जो मर्डर हुआ था उसमें PPP ने जो उनको डिफेंड किया, उन लोगों को बचाया, वो any human rights speeches that Bilal gives, that I also like, good speeches, mean nothing, क्योंकि जब आप एक मर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं they mean nothing. But at the same time ये जब PPP का नाम आए तो नाजिम जोकियों का नाम आता है, साथ ही आता है कि PPP का आपने नाम कैसे लिया। लेकिन जब PMLN का नाम आता है तो मॉडल टाउन मैसेकर का नाम नहीं आता। जब PTI का नाम आता है तब इस बात का नहीं आता कि अली अमीन गंडापुर allegedly paraded a girl naked in his village। तब वो PTI का हाई ग्राउंड कहाँ चला जाता है। तो अगर आप कहते हैं PPP को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है जब नाजिम जोकियो एग्जिस्ट, then why don't you say कि PTI को कैसे कोई सपोर्ट कर सकता है जब अली अमीन गंदापुर एग्जिस्ट। इवन लिबरल पढ़े लिखे लोग अली अमीन गंदापुर और अली मोहम्मद खान जैसे लोगों को हीरो बना रहे होते हैं just because they're PTI. Acha, can I chime in as a follow-up question to the same conversation you're having? So Bilal, okay, condemnable, maybe not fascist, okay, good nuance there. Let me ask, then you said something about fringes, right? And I wanted to get your input on this as well. We've interacted with somebody who you would say is quote unquote on the fringes of that party on social media, Burqa Mona Lisa, and we had a debate with him. Turned out he was an uncle sitting in Saudi who was the most vile, abusive troll on Twitter at that point in time. That man, that's his claim to fame, by the way. That's how he became popular in so PTI world. He's standing next to Imran Khan, reading out an oath that was being taken, and there are pictures of it. So isn't it true then that the fringes actually become part of the mainstream for the very fringe acts that are condemnable to you and me, and end up next to the former Prime Minister of Pakistan and the leader of the PTI
who talks about Islam and Riyasat-e-Madina, the most vile, abusive man is standing next to him taking an oath. How do you feel about that? I feel disgusted. I think कि जब आप इस तरह के fringe लोगों को इस किस्म का platform देते हैं, regardless of which party it is, and when it happens in PTI, I condemn it clear and strictly. But ये चीज एक society level issue है जो आप project करते हैं एक particular party के ऊपर. So for example, that Safdar guy, Mariam's husband, is a bigot. मतलब जो वो minorities के खिलाफ बोलता है, 100%. And so what I'm trying to say is that when you use those fringe elements to condemn an entire party and their entire voter base, what you essentially, what you're projecting is essentially कि जो आपकी political parties भी हैं वो भी society से ही आ रही हैं. They're a reflection of the society, right? या ये so you कहना need सब एक जैसे हैं. And so exactly, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप मतलब आप या तो आप वो अगर नायाब होती हैं या नायाब की अगर और भी revolutionary side of the family होती तो वो कहते सब जला दो and then let's start from start, but you're not going to start that. And by the way, that's the primary thrust of my argument, and I would love to chat नहीं, that but बिलाल today. इसमें अगर एक nuance हम ऐड करें, देखिए आपने सफदर की बात की, बिल्कुल बिगेट है, बट PMLN के अंदर से उनको क्रिटिसिज्म आया. वो जो एक एंटी अहमदी रेटरिक है वो तो खान साहब खुद यूज करते हैं ना, अपनी पार्टी से तो आना दूर की बात. अली मोहम्मद खान का जिस तरह का ट्वीट था आपने भी देखा था, राइट? सो कम से कम PMLN के अंदर से सफदर की क्रिटिक आती है. या सफदर इज डिस्कस्टिंग, तलाल चौधरी इज इक्वली डिस्कस्टिंग, आबिद शेर अली इज इक्वली डिस्कस्टिंग. Yeah, there is a strong element within the PMLN that actually runs that campaign. So yes, there are two parts of it. I would say कि as a strategy, ठीक है ना, as a strategy जलील करना और गालियां देना ये PTI स्पेसिफिक है. नहीं तो बिलाल ये विमेन जर्नलिस्ट पागल हैं, वो सारी दिमाग खराब है, वो सारी पटवारी जियाल हैं. If they wrote a letter saying we're specifically, and like bunch of women journalists wrote a letter saying specifically PTI से हम टारगेट होते हैं और हम ट्रोल होते हैं, आप क्या कहेंगे? वो सारी बिकी हुई थी. यार इस प्रेमिस को जो आप ये कह रहे हैं ना कि एक इट्स डिलिबरेट स्ट्रेटजी कि आप गालियां दें और इस तरह वो करें, मतलब इसको आप अनपैक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना मतलब सच है या नहीं है. आप यू बिगिन बाय व्हाट आर PTI सपोर्टर्स नोन बाय विद द Y word. It itself is a गाली. It is used on PTI people, not but projected not all out. PTI supporters are UTIs. Some PTI supporters तीन are level बना दिए UTIs. उसके But तो. That's like me saying कि कोई PMLN supporter अगर गुल्लू भट्ट है, but बिलाल अगर मैं बोलूं गुल्लू भट्ट चूतिया है, if I say गुल्लू भट्ट चूतिया है, इस पे क्या मसला है? इसी तरह कुछ PTI के सपोर्टर्स यूतिया हैं. आप उसको कह रहे हैं ना कि ये एक ही पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और ये एक ही पार्टी की एक्चुअल वो स्ट्रेटजी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के देयर, क्योंकि अब ये आप प्रेमिसेस को मानेंगे नहीं, बट अगर आप कभी मेरी साइड पे आए और अगर आप प्रो PTI बातें करें तो जो हमें जिस किस्म की गालियां मिलती हैं और जो हमारी औरतों को भी जिस किस्म की गालियां मिलती हैं, तो यू वुड रियलाइज कि दिस इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट पाकिस्तान के अंदर. और जो गालिम गलौज जो पाकिस्तान के अंदर सब एक जैसे नुआंस खत्म कर देता है ना. बिफोर इट इज एग्जिस्टेड बिफोर PTI. अब अगर आप वेट बिलाल एक सेकंड. हाँ, नवाज शरीफ और जरदारी इस तरह की बात की है स्पीच पे, जिस तरह खान साहब ने जाके बोला था, मरियम तुम्हें तो मेरा इतना नाम लेती हो, मियां जो है तुम्हारा पर, इस तरह की बात नवाज शरीफ जरदारी की है ना यार, की है. एक सेकंड शहजाद, 90s के अंदर जो पूरी 90s ने अभी की बात करो ना यार अभी नहीं, मतलब मैच्योर होता है ना पॉलिटिशियन, मतलब उन्होंने भी तो बात वो कर रहे हैं ना. मैं ये नहीं कह रहा कि वो इसी तालाब से वो भी निकले ना. लेट्स टॉक अबाउट देम टुडे. शहजाद सुन लेना, एक आप बोलते हैं ना हिस्ट्री यूथियों की तभी शुरू होती है जहां से आप शुरू कर रहे हैं, तो अब सुन लें. और इसमें मैं I would want to add, like, see Shehzad, like Bilal has a point. This is a societal problem, and we need to see PTI gets a lot more. Let me finish. PTI gets a lot more critique on the social media abusive campaigns because by very nature they dominate that space. The other two parties are actually shit at it, right? So by very nature amplification जो होती है वो उनकी होती है. Let's look at the offline data that we have also on some of these fascist tendencies, whether abusive or violence in the real world. 3x more likely. Sindh is 3x more dangerous for journalists than any other province in Pakistan. This is a province that has been ruled by a quote-unquote left-leaning party
by the Bhuttos who claim to be all for human rights, etc. So when we talk about actual violence, yes, online violence is also condemnable and heinous. But when we talk about actual real world violence, the data shows us that Sindh actually is the most dangerous place for journalists. And no one seems to be bothered about that to an extent on the online social media debate. And in fact, आप थोड़े apples and oranges नहीं compare कर रहे उज़ैर, because you know if I said Imran Khan said this and your retort was 90s में ये हुआ था, अभी शीरी मज़ारी ने, एक सेकंड रुक जाओ ना, शीरी मज़ारी ने अभी क्या मीम शेयर की कि इमरान खान अपने कुत्ते को खाना खिला रहा था और उस कुत्ते की जगह मरियम नवाज जो अपनी माँ की कब्र पे बैठी हुई थी वो एडिट करके उन्होंने डाल दी। अभी एक जर्नलिस्ट तैमूर झागरा जो आपका पढ़ा लिखा है उसकी तनकीद कर रहा था, तैमूर झागरा ने उसको पठानों की स्वीट डिश रीट्वीट किया। अभी फवाद चौधरी टीवी पे गए और उन्होंने बोला बड़ा वो ब्रेव है, पठान के साथ एक उसमें चले गए बाथरूम में। शहबाज गिल ने जिस तरह की बातें की, योर रिटॉर्ट इज बाकी भी ऐसे हैं। आई एम सेइंग वो लोग भी कुत्ते के बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे वाली बातें करते हैं, बट टू से पीटीआई इज नॉट वर्स I think is less than. It's not just bad apples. हमारे यहाँ bad apples नहीं भाई। G for गरीदा, G for जो tweet किया जाता है, it starts right from the top यार. Let's admit it. ये let's start right from the top. अब मैं आपको ये बात किस तरह समझाऊं कि जो, and this will almost become unbelievable for you because that's how much the echo chambers are different. But PTI की जो actual social media team होती है, I'm in some of those WhatsApp groups, they're like, खुदा के वास्ते stop using this language. They're actually, their policy उनकी online भी, and I've had this conversation live with Gibran also, who was their Twitter leader at that time, कि they're like, कि by policy, एक तो they've actually got a written social media policy that says no abuse, which no other political party has right now in Pakistan. And अगर आप and वही वाली बात है उज़ैर की कि PTI dominates social media so much कि all those fringes also come and they have PTI के flags. But जो मैं आपको argue करना चाह रहा हूँ, इस जो मुझे जो गालियाँ मिलती हैं, जो PMLN के supporters से मिलती हैं, when I go to them, they are all directly followed by Maryam Nawaz. जब आप इन लोगों के पास जाएंगी, जो आप लोग को भी PTI से भी गालियाँ मिलती होंगी, I'm not gaslighting you, मिलती होंगी, लेकिन जब आप उन लोगों के पास जाएं तो they might have a large following, but they are not followed by PTI, they are not followed by the official PTI team. अगर official मैं आपको कैबिनेट मेंबर्स की एग्जांपल दे रहा हूं बिलाल, the example I gave you is cabinet members. जहां तक कैबिनेट मेंबर्स और उन लोग की बात है तो that is condemnable, that is wrong, that should not be happening. As somebody who has this opinion, how do you feel like Shehbaz Gill being the head of staff, chief of staff for Imran Khan? आप कह रहे हैं पीटीआई की पॉलिसी है no abuse, then Shehbaz Gill gets promoted for the things he says. How do you feel about that? So I think although the torture that's happened with him has made it complicated to say this out loud, but I think Shehbaz Gill is not a good man for. Then why would Imran Khan promote him? Representation, and I think Imran Khan should not have promoted him to chief of staff. Okay, what do you feel about Fawad Chaudhry and the language he uses? I think Fawad Chaudhry, when he uses that language, matlab, it reveals our deeper societal ills, the homophobia and all of that. What do you think about Sheikh Rashid and how he was used for years by PTI? Sheikh Rashid is not part of the is PTI. Not part of it. But for years he gave a speech right before Imran Khan on every jalsa. वो नाम ले सकता हूँ जो मैं अच्छा let me इस आर्गुमेंट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी जो आर्गुमेंट थी ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, ये फ्रिंज तो नहीं है ना, ये तो सेंट्रल पार्टी है यार। जो वही वाली बात है ना कि आप अगर कुछ कमेंट्स को डीकंटेक्चुअलाइज करके उसको आपको वो देखना है तो यस आई कैन कमेंट्स मैंने डीकंटेक्चुलाइज किया, लेकिन जो मैं आपको अगर स्ट्रेटेजिक उसकी बात करनी है तो लेट मी गिव यू 2 more examples of how this happens. जो पीपीपी कर रही है कि क्लेमिंग टू बी लिबरल एंड डेमोक्रेटिक एंड जर्नलिस्ट को मार रही है, that is a much bigger crime and graver crime than जो पीटीआई की आप बात कर रहे हैं। जो आपकी पीएमएलएन के अंदर जो आप अभी इसहाक डार जो है वो डॉलर के साथ कर रहे हैं और जो रुपी के साथ कर रहे हैं, that is a much graver crime for the people of Pakistan than to take a societal crime in Pakistan कि हम लोग बहुत गालियां देते हैं। Again, what are you comparing with what यार? इसहाक डार को आप कंपेयर करें फ्यूल सब्सिडी के साथ, that would make sense. So let's talk about we're that, stuck right? in Let's circles. talk about substance. We're stuck in circles on this, but anybody who's online and says कि जी पीटीआई अब्यूज, हम पीटीआई इनकरेज करती है कि कोई अब्यूज ना करे, तमीज से बात करे, और उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स और उनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स में ये डिस्कस हो रहा होता है कि हम तमीज से बात करेंगे। I mean, this is the disconnect, right? This is Shehzad, I'm telling you the reality. Okay, Uzair, verdict on this.
Yeah, my verdict on this is that, again, I've more and more started following the 80-20 rule, which is 80% of the time, most normal people will agree on things. So we can all agree that online abuse and campaigns to abuse people are condemnable and vile and should not occur, that party leaders should not be encouraging this type of behavior, and that it happens. And this is a societal thing. I agree with Bilal. It's a reflection of a broader societal tendency. Yes, PTI sort of seems to or leads this on the online space because they dominate it. And so with great power comes great responsibility. My own take on the PTI is they have not done enough. In fact, when people like the Burqa Mona Lisa stand next to Imran Khan, or people like Shehzad Ghias become chief of staff, that to me shows that the party leadership actually, the path to success in the party is actually doing these types of things, and it should stop. And I think Bilal broadly agrees with that, and we can all agree on that. The fact that, more mature, sane people should say this should stop. And if it doesn't, then there's only so much we can do. But the least we can do is say this is vile and condemnable behavior. If people like Jhagra, Asad Umar and Shiri Mazari have been reduced to abusing people online just to be relevant in the party, ये कहना कि खान साहब अप्रिशिएट करते हैं ऐसी चीजें, ये गलत नहीं होगा. इमरान खान, एंड अगेन मैं चुड़िया की मेरी खबरें, he genuinely in private meetings appreciates अगर आप टीवी पे जाके किसी को बुरा भला कहेंगे, इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे, which is why ज्यादातर लोग खान साहब की अप्रिसिएशन और अटेंशन और पार्टी में प्रमोशन के लिए इस तरह की बातें करते हैं. Look at all the people who've been promoted in PTI. Let's talk about how you get promoted in the PMLN and PPP also. अगर आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, good pivot. तो We can pivot on let's talk about it. Then let's talk कि PMLN के अंदर आप मिफ्ता इस्माइल जैसे, even if I disagree with his policies, the guy was a good man at heart. मतलब he genuinely wanted to do what was right for the country. और आपने एक खानदानी बंदे को जो पता नहीं क्या पढ़ के आया है, जो मूडीज को एक बिफिटिंग जवाब देगा, सुमो नोटिस लेगा मूडीज का, मतलब वो क्या इंसान है, और हमारी इकोनॉमी के साथ क्या कर रहा है. और आपका पॉलिटिकल कैपिटल एट द हाईएस्ट लेवल. आप कहते हैं ना कि इमरान खान रिवॉर्ड करते हैं ये बुरी चीजें. मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने मिफ्ता अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल, अपनी 30 साल की लर्निंग जो है वो ये दिखाई है कि हम इसाक डार इज द सोल्यूशन टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स. ये होती है प्रमोशन आपकी पीएमएलएन के अंदर. मतलब पूरी मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है. आप एक बात कर रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपका बेसिकली पाकिस्तान की सोसाइटी रिफ्लेक्ट हो रही है, और आप पूरी वो एक पार्टी को प्रोजेक्शन दे रहे हैं. उधर इसाकदार जो है वो पूरे मुल्क को जो है वो आग लगा रहा है. सिंध के अंदर जो आपकी फ्लड्स के बाद जो सिचुएशन हुई है, आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये तो क्लाइमेट चेंज का वो इफेक्ट है. इमेजिन अगर आफ्टर कोविड जो है इमरान खान ने बोला होता कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये तो अल्लाह मियाँ का अजाब है और हम इधर कुछ नहीं कर सकते. मतलब इमेजिन कि आप पीपीपी के अंदर किस किस्म के लोग apart from political rhetoric, what do you think the government should have done that they've not done? Is that a serious question? Yeah, genuinely. But इस flood से दुनिया की कौन सी government could have prevented? No, but what government could have prevented these floods, Bilal? You cannot prevent floods, but these floods are a recurrence in Pakistan's history. आपका जो flood response था, the millions who have been left to fend for themselves in Sindh, while आपके ये शहबाज शरीफ और बिलावल और ये पूरी दुनिया घूम के God knows what they're doing. But what are they doing? What are they actually doing? Let's be honest. If you're arguing that they're trying to fundraise, there are ways to fundraise without being out. Of course they are. कौन सी आपकी fundraising इधर हो गई है in a proportion to what the devastation that has happened and the amount of attention that existed on Pakistan? Have they not raised funds at that moment? Have they not managed to IMF to give $2 billion? आप बाहर जाके शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आप मेरी डेट जो है वो रिस्ट्रक्चर कर दें, उधर आपके बॉन्ड्स जो है वो गिरना शुरू हो जा रहे हैं. कोई भी सोचे समझे बगैर even the way that fundraising is going, चलो अगर आप मान भी लें कि fundraising करने जा रहे हैं, it's neither been successful. It has in fact backfired in multiple places जहां आपके शहबाज शरीफ और उन्होंने वो करा है. लेकिन अगर आप सिंध के ऊपर particularly आ जाएं, जो
आपकी जो existing devastation थी, जो existing misgovernance थी, वो amplify हुई है, and the amount of support that could have been provided to those people and the speed with which it would have been provided, the infrastructure that was blown away, आप एक जेनेरिक बात कर रहे हैं ना, मुझे स्पेसिफिक दें कि यार यहाँ ये चीज होनी चाहिए थी, ये नहीं हुई, because I genuinely feel like you've not मैं दे देता followed हूँ, the flood response. मैं दे देता हूँ, Let Uzair मैं दे no, but देता हूँ। Bilal has made a claim. I want evidence for नहीं it. तो I'll put the मेरे पास भी evidence on the email है ना, table. call a friend. जी हाँ, call a phone a friend. तो I'll put it. 2010 की जो है वो फ्लड की रिपोर्ट है, NDMA ने लिखी थी, बिल्कुल। उसके अंदर काफी सारी recommendations थी, including building up capacity. For example, having a base and a stockpile of tents for the next floods. And right? what stockpile did they actually have? सुन तो लो ना बात पूरी Tell me यार। what stockpile did they actually वही have? कह रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ ना कि उसके अंदर एस्टिमेट्स थे कि 70 to 100,000 टेंट्स का स्टॉकपाइल होना चाहिए at any given point in time and equipment should be available for flood relief. They did not. In fact, Sindh PDMA has 7,000. नहीं था भाई। फिलहाल 70,000 टेंट्स का स्टॉकपाइल था, बट जब 70,000 टेंट्स होंगे और 33 मिलियन फ्लड अफेक्टीज होंगी, वो 70,000 टेंट का क्या करेंगे? जो दूसरा आपकी बात है कि दे शुड हैव बीन डिप्लॉयड, मैं पढ़ा हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन लाइक सिंध गवर्नमेंट को 1000 गालियां देने वाली हैं जो हम दे सकते हैं, बट जो एक्चुअल मसले सेइंग ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, इन चीजों पे वी शुड यूनाइट, इन चीजों पे कि डेट रिलीफ मिलनी चाहिए, वी शुड यूनाइट, वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज। अगर ये बाहर मुल्कों से जाके भीख मांग रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं, दैट्स गुड फॉर द कंट्री। दे डिड हैव अ 70,000 टेंट्स का स्टॉक पाइल, इट कुड नॉट हैव डन शिट व्हेन 33 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। बी, जो आप कह रहे हैं डिप्लॉय होना चाहिए था, वो भी था, मसला ये था रोड्स ही नहीं थे, तो वो डिप्लॉय कैसे करते? शहजाद, आप बात सुन ले पहले उज़ैर की कंप्लीट। Yeah, so one, again you have a relief and rehabilitation plan in place that was obviously not there. I had friends who went into rural Sindh who actually found their way without the roads to get relief out, and there was no Sindh government. In fact, I know personally people who had to pay bribes to the Sindh police for access into these rural communities to get relief goods in, because there was no government in place to say this is relief, let it go through. In fact, it was a free for all in that province and still is in many parts. Number 3, there were also recommendations made to bring in moving, bulldozing equipment, etc. into higher ground. That did not happen. You can go listen to my podcast with Dr. Myra Hayat. She talked about the same problem. Now, why did it happen? Because of bureaucratic issues, corruption ki allegations, वगैरह वगैरह. Number 4, you have not built since 2010 a capable forecasting and meteorological system across the country. That again, after the 18th Amendment, is a problem, because is it a provincial issue? Is it a national issue? Work has not happened. Number 5, with the PTI's experience of COVID, we knew that the NCOC model actually works really well in disaster relief. That was not put in place in a timely fashion by the center. That's a PDM government fault, and they're to blame for that. Number 6, you have an issue in terms of Sindh and its poverty levels over the years. And what's happened since 2010 is that people have not even recovered since 2010. So where did that money go? No accountability has been done in that province about what happened to the relief and reconstruction. In fact, I directly know, again, through friends who went into rural communities who were just crying. Why? Because they were like, हमारा तो 2010 का जो पैसे आने थे वो अभी तक नहीं आया, और अब ये एक और सैलाब आ गया 12 साल बाद, अब हम क्या करेंगे? Number 7, you talk about being an agricultural economy. The last livestock survey in Pakistan was done in 2006. So all these numbers you're seeing about livestock that has perished is frankly bullshit, because no one in the government of Pakistan or the government of Sindh or the government of Punjab or the government of KP or the government of Balochistan has put in the effort to just count the livestock that is there in rural Pakistan. If you don't have a count, how are you going to estimate losses and give money to people? Number 8, you have an issue in terms of the coordination between PDMAs and NDMAs, to the extent that Amar and I have been putting together data की formatting एक नहीं है. बलोचिस्तान का जो PDMA की वेबसाइट है वो अकाउंट सस्पेंडेड है आज तक.
right? So that governance problem is not just a central Uzair, Islamabad government in particular, problem. how difficult it was to get the data. I think there's no data, and it's like you go on their PDMAG website, they have a daily sit-rep report. Thank God that they put that out there, but there is no methodology. What is affected person, what is displaced person? They give you charts instead of tables. So no wonder Shehbaz Sharif is like, ये real time नहीं है भाई, real time हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने coordination ही नहीं की पिछले last flood 2010 के बाद से, right? So these are all Shehzad, governance challenges that, again, in Sindh, it's particularly angering and triggering, maybe because I'm from Karachi, but also because since 2008, they've been ruling. And you cannot just say, Bilawal Bhutto Zardari cannot just say कि आफत आ गई, आफत आई, लेकिन आपकी जो अपनी capabilities थी, जो 2010 के बाद की recommendations थी, उनमें से आपने 20% भी काम नहीं किया यार. So give me a break on this. No, I agree with you that the failings are over a decade. The failings are not over the past 20 days. So, yeah, but PPP has been ruling over that decade. हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं PPP को फ्री पास दे रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ उनको गालियां दें, बट जिन चीजों पे गालियां बनती है उन चीजों पे गालियां दें. जिस तरह वेदर फोरकास्ट वाला वो spot on. So you know when people say जी ये रिलीफ डिप्लॉय क्यों नहीं हुई? Because the weather forecasting system said कि कोई 1% chance है. And you know what they got? आप imagine you're sitting in the government. They got a weather forecast कि more than normal rains होंगी. ये officially weather forecast ने लिख कर उनको दिया. आप मुझे बताएं, आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपको कहा जी more than normal rain होगी. आपकी predictions, आपके जो experts बैठे हैं, उन्होंने बोला जी 60,000 लोग displace होंगे. आपने 70,000 टेंट मंगवा लिया, आपको लगा जी हमारा काम हो गया, हम deploy कर देंगे. And then what happened is what happened. So the failings, NCOC 100%. NCOC work like a charm. लोग कहते हैं मैं PTI को credit नहीं देता, even though army ने चलाया था NCOC. Phenomenal. 2 months after the flood, to not have a coordination committee, to not have an NCOC type का massive failing. और इतनी basic चीज क्यों नहीं है? So yes, इन चीजों में उनको देना बनता है, but none of that should politicize जो हम अब COP20 पे जाके बातें कर रहे हैं. None of that should mean कि जो हमारी national interest में चीजें हैं ना, IMF को जी फोन कॉल्स करके वो रुकवाने की कोशिश करना. COP20 पे अगर अब हम जा रहे हैं, reparations, वो reparations नहीं बोल रहे, grants बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, इन चीजों पे ना the nation should unite. एक थैली की पिक्चर लेके, एक एनेक्डोट लेकर कि ये देखें दुकान में बिक रहा है, फ्लड रिलीफ ना करें, इंटरनेशनल मीडिया में जाकर कि ये लोग जेब में पैसे ले लेंगे, फ्लड रिलीफ आप लोग ना दें, इंटरनेशनल एजेंसीज को टैग कर करके एज अ कैंपेन कि इनको फ्लड रिलीफ ना दें, ये लोग ऐसे हैं. That hurts the country. So things that affect our country, we should at least come together on that, even if we don't like the person in power. And Uzair and Bilal, you both will agree, जब COVID आया था, मैंने कोविड के लिए जो गवर्नमेंट के लिए बेहतर चीजें हो सकती थी, whether that be awareness campaigns, whether that be video, I did everything. जी, ओके, क्या आपने काफी टफ टाइम लिया था तब गवर्नमेंट को, जब उन्होंने लॉकडाउन नहीं करने का और फिर क्या हुआ? खान साहब टीवी पे थे और कह रहे थे कि लॉकडाउन बहुत बुरी चीज है, and NCOC had announced a lockdown at the same time. Do you remember that? उन्होंने तब elite pressure resist किया था for the first couple of weeks, and then when the data actually warranted a lockdown, was on TV saying lockdowns जो हैं ये elites मांग रहे हैं, ये गलत है, and NCOC had announced a lockdown, and let's agree the lockdown worked. वो उन्होंने उसको रीब्रांड अपनी इज्जत बचाने की, हमने नहीं लॉकडाउन नहीं किया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया. Smart lockdown. But खुदा का खौफ करो. I mean, also, but I agree with you that, you know, there are two conversations here on the floods, right? One is obviously the international conversation, which should be a united front. Pakistan needs support. There is donor fatigue, and there will be already a lot of questions being asked about what you're going to do with this money. And I said this on another show yesterday as well, on Kamran Khan's show, that when you bring in somebody like Dar, then it actually hurts your negotiation position, because it's very evident even to me from the outside that what Dar is going to do is use these resources to juice the economy ahead of elections, and that's going to cause a problem. The second conversation on this is domestic, and there I gave a lengthy example of all the things that went wrong in Sindh, but even in KP, if you go on Google, anybody listening can go on Google, put in Kalat, put in Swat, pre-June 2020, just limit your search in the images before June 2022. You will see nice shiny hotels, nice development, nice domestic tourism, all on riverbeds, which is illegal. So somebody, maybe my Insafian friend sitting here, should ask the halal Riyasat-e Madina type government in Peshawar
कि इस परमिट कंस्ट्रक्शन के परमिट्स किसने दिए, ये लीगल थे, इसके ठेके कैसे आए, because those are all losses. And in any normal country, allowing something like this and then that leading to losses and loss of life is grounds for a civil lawsuit, especially in a place like America where Bilal and I are sitting. So somebody has to ask that question कि भाईजान आप अगर कह रहे हैं कि 2014 से हम बड़ी हलाल गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उन 8 सालों में ये जो डेवलपमेंट हुई, इसके ठेके, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के किकबैक्स किसको कितने मिले, ये हुआ तो काम केपी में है ना. For example, in this sense, in terms of the flash flooding and the damages caused. So there are governance conversations that need to be had. And those, I think, are part of the domestic debate, which frankly is also not happening, which is a shame. Bilal? Yeah, so I agree with you on that कि on riverbeds के ऊपर वो construction नहीं allow करनी चाहिए, and in fact I think it's a great opportunity for Khan to actually put those people and punish them, and if he wasn't fighting with the army at this point there would be more space, but I still think that he should. जो शहजाद जो तुमने पॉइंट करी है, जो डोंट पोलिटिसाइज क्लाइमेट बट एक सेकंड, लेट्स स्टिक टू दैट पॉइंट, राइट? उनकी हुकूमत में ये हुआ, चले आपने फ्री पास दे दिया कि अब वो पनिश करेंगे, बट इजंट खान डूइंग द सेम थिंग विद रूडा? जो रूडा के वो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, किन लोगों का पैसा रूडा में लगा हुआ है, क्यों बनाया जा रहा है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाट्स योर टेक ऑन खान बीइंग अ सेल्समैन फॉर रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट? I am actually, और ये उज़ैर इसको काफी हाईलाइट करता है, I'm actually very curious कि अंदर की कहानी इस चीज के अंदर क्या है. I obviously feel like a leader that I support genuinely this much should not be a spokesperson for a real estate on the Ravi riverbed. I agree with you on that completely. I think that there is something that doesn't smell right there on a number of different levels. And I'm very curious for somebody to do some investigative reporting to get the truth of that out there. So, मतलब उसको, you know, it's like ये एक बहुत ही interesting चीज है कि हमारी and I get a lot of critique on your podcast saying कि Bilal doesn't defend PTI enough. किसी ने बोला is the reluctant fundamentalist. हाँ, कि इसमें मैं एक चीज कह दूं कि देखो, आप शादी में भी अपनी पार्टनर से हर चीज पे अग्री नहीं करते, तो एक पॉलिटिकल पार्टी I choose to support it and I can talk about why I choose to support it despite मतलब बिलाल खुल के बोल दो ना रूडा के बारे में, जिस तरह आप लोग मुझे क्लोजेट जाला बोलते हैं. कोई मेन स्ट्रीम टेलीविजन शो है जिसने पीपीपी ने जो मलिक रियाज से मिलकर सिंधी विलेजेस को हटा के बहरिया टाउन बनाया है? कोई जो पीटीआई के इमरान रियाज खान टाइप, उन्होंने इस पे शो किया? मैंने किया है, कुछ किसी ने किया है? तो जो चीजें होती हैं जरा खुल के बोलो ना यार. फिर अगर आप मलिक रियाज से मिलकर आप लोगों को मार कर, फार्म लैंड, आपने भी वीडियोस देखी होंगी, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करके फार्मर्स रो रहे हैं, और खान साहब जिस डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पोक्सपर्सन है, वो ट्रैक्टर चला के क्रॉप्स तोड़ रहे हैं, और खान साहब कह रहे हैं ये पाकिस्तान की सक्सेस होगी, और आप कह रहे हैं मुझे उसके बारे में इनफ नहीं पता. क्या हो गया बिलाल? नहीं, so I feel like मैंने कह दिया है खुल के कि I feel like this is very condemnable, and इसके ऊपर जो जिस बात पे मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग चाह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ कि खान साहब को क्यों आग लगी हुई है इसको सपोर्ट करने के लिए. So that's what I want specifically investigative reporting on. And I want, कह रहा है ना कि वो पैसों के लिंकेजेस कहाँ हैं, इसको आप रिवील करो, right? Because what I don't want is Khan Saab is also like, is Khan not in bed with Malik Riaz to build a Bilal house for himself? Like that's what I don't want. I want to avoid. Is Khan not in bed with Malik Riaz, Bilal? मतलब ये जो सूफी यूनिवर्सिटी है उसकी फंडिंग किसने की है? मलिक रियाज ने की है. So I think वही वाली बात है ना कि आप endemic issues within society, मलिक रियाज ने बिलावल हाउस भी बिल्ड किया है, मलिक रियाज ने आर्मी के साथ भी, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ ना, पीपीपी ने कलूट करके सिंध पुलिस के साथ बहरिया टाउन बनाया है. हाँ, so I think these things are condemnable and they're condemnable across the political spectrum. यूके ने जो पैसे भेजे कि ये करप्शन के मलिक रियाज के पैसे हमारे पास आए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट वापस ले ले. What did Khan साहब do with that money, Bilal? Remind me. So I think that part Sindh government actually contested कि हमारे पास आने चाहिए, and I think but वो गए किसके पास ये तो बता दो. I remember, and I think I mean I genuinely don't remember it, but I think Supreme Court के साथ नहीं, aren't they there? नहीं, तो उसकी इसके 3 एलिमेंट्स हैं. पहला एलिमेंट तो ये है कि सिंध वाज कंटेस्टिंग कि हमारे पास आने चाहिए. फिर कहानी बनाई गई कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो फाइन थी उसके पैसे, हालांकि they're not related. But the third, which is where a criminal conversation can begin and an investigation should have happened and can still happen, but it won't because all major parties are in bed with Malik Riaz, is that the agreement was sealed in the cabinet
and made secret in the cabinet, and no one in the cabinet even saw that agreement. So आपका जो वो था accountability czar बाबर, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, he's barrister साहब, हाँ, उन्होंने ये negotiate की थी, और खान साहब ये record पर है, and I think Shireen Mazari at that time and since then has even opposed this, कि कैबिनेट में सीक्रेट एग्रीमेंट जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी बगैर पढ़े. So that is from an outsider's perspective, and maybe I'm biased against the PTI as people say, but still, even if you take that off, like that is a smoking gun of corruption that happened in the cabinet itself, where an agreement was sealed and not disclosed to the representatives of the people of Pakistan for money that is owed to the people of Pakistan. So एक आदमी जिसकी पूरी पॉलिटिक्स है कि करप्ट लोग पाकिस्तान से पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, एक बैरूनी मुल्क पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान को वापस देता है, वो मलिक रियाज को दे देते हैं. So doesn't the entire house of dominoes fall right there? Yeah, I think कि इसमें आप कुछ elements जो हैं, मतलब, and I will not defend any corruption here, and I agree कि अगर आप call out कर रहे हैं hypocrisy, तो that is a fair call out. But I think the other part of it is कि वो जो proceeds जो थे वो I think नवाज शरीफ की property बेचने के थे, और I think कि the chain of corruption, वो पैसे नवाज शरीफ जो है वो बाहर भेज रहे थे, इधर जो है वो पैसे अंदर आ रहे थे. You could argue like all around it, and you could also argue कि the confidentiality well, you're really clause, struggling to argue this was part of this agreement. But I condemned it flat out. But I think देखो, we can continue this. This is the debate that happens in Report Card on Geo as well. I want this podcast to be more elevated. नहीं, report card करते हैं. आप 2 versus 1 PTI कर लें, लेकिन I think कि आपके साथ है, Uzair is with you today. Let's talk about how we're going to get out of this. Let's talk about how we're going to get out of this society. इलेक्शन के अलावा आप दोनों को कोई चीज, रूडा की आप दोनों को कोई औकात क्या है तुम्हारी, रूडा बनाओगे तुम, और तुमसे आज तक लोटा तो बन नहीं सका, और पानी आता नहीं अपनी गांड धोने के लिए. तुम लोग बात करते हो, तुम लोग अर्तुग्रो लो, और कोई मुल्क लानत नहीं भेजता तुम्हें. जी हसन साहब जी, और ये कौन बोल रही है रीमा, और चुप कर. जी इरशाद साहब आपके पास आएंगे, इरशाद साहब आपके पास आएंगे. ओ जी, लेकिन अच्छा उज़ैर, so I was just in Islamabad, so let me talk about like elections की demands और ये वो, and I had these conversations with a senior member of the PTI, and also a couple of senior folks close to the PMLN or / the PDM, right? And my question was, PTI वाले बड़े जो है ना, representative बड़े confident थे कि जी 2/3 majority तो आवे ही आवे, right? And I was like, चला hypothetically जो है कह देते हैं आपकी आ गई 2/3 majority, आप इस्लामाबाद में वापस काबीना चला रहे हैं, तो आप ये बताएं कि मुल्क का जो हाल है इकोनॉमिकली, उसका प्लान क्या है, right? That's what I focus on. So I asked on the economy, and I kid you not, like, this is the response I got. कि जी देखें, initially जो issue है मईशत के अंदर वो डॉलर इनफ्लो आउटफ्लो का है. तो खान साहब जब वजीर आजम बनेंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जब डॉलर भेजेंगे तो मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम मईशत को ग्रो करेंगे. तो बिलाल भाई आप जरा रेडी हो जाएं अपना बैंक अकाउंट लेके, because literally this was I'm not joking, this was the serious plan that was given to me on the PML. Let me finish. On the PMLN side, the argument was कि डार साहब आ रहे हैं, डार साहब जो है वो he will shout down the dollar, उससे इन्फ्लेशन कम होगी और जो है मईशत वापस बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा और हम ग्रोथ जनरेट कर सकेंगे, और इंटरेस्ट रेट्स भी कट हो जाएंगी क्योंकि इन्फ्लेशन कम होगी. दिस इज लिटरली all of the plan. This is not a joke, this is not surface level media talk, this is like प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के जी समझाएं तो आप करना क्या चाहते हैं, और दोनों तरफ ये प्लान है, इसके आगे कुछ नहीं है. तो घबराना शुरू कर दें आप सब. Uzair, हम सब इसाक डार को गालियां देते हैं on this panel. None of us agree with Daronomics. But how is he any different from Shaukat Tareen? Isn't this exactly what Shaukat Tareen was trying to do जब वो growth करने की कोशिश कर रहे थे? Shaukat Tareen's approach was a bit different, but similar. So Shaukat Tareen's approach was that at least he will maintain a market-determined exchange rate and not manipulate the currency. See, what he was trying to do was we need lower rates, we need growth. So he was pumping growth through fiscal deficit. And that in effect, like running a higher fiscal deficit means that you're putting more rupees into the market, which demand supply, the dollar will strengthen against the rupee. So Shaukat Tareen at least realized that having low interest rates, growth, and a stronger rupee is not possible. You can have two of the three, in essence. But didn't he fail? Didn't after a year he be like, he failed. Of course. So वो उन्होंने
म्यूट हो गए हो तुम उज़ैर खुद से। उन्होंने जो है कोशिश करने की जो किया, obviously he was an economic arsonist, as is Dar, as is Shaukat Aziz before him, and there are only two sane, and Khurram Hussain said this on my podcast and I agree with him, there have been only two sane sort of finance ministers that this country has had over the last 25 years, is Hafiz Sheikh on either side of the aisle and Miftah Ismail, who recognize the limits of the economy. The rest of them don't really seem to recognize that this is a fundamentally broken economy, and if you try to rev up growth, you're going to crash. And I think Tareen tried to do the same. He failed spectacularly. For some reason, he's still relevant and actually running the economic plan making team of the PTI. And on the PMLN side, you have Ishaq Dar running the show. PPSP though is irrelevant because they will never rule Islamabad, and so finance ministry unki aati nahi hai, so they're chilling in that sense. But this is literally the plan, and there is no other plan. So we're going into a commodity upcycle with higher interest rates and two leading parties that fundamentally do not seem to grasp all that ails Pakistan's economy. They just don't. I have a take on this, but Bilal, you wanted to say something. यार मुझे एक्चुअली उज़ैर से एक चीज फंडामेंटली पूछनी है, बिकॉज अगेन आई वांट टू बी लाइक लेट्स बी फॉरवर्ड लुकिंग. डू यू फील लाइक the economic crisis can be solved without solving the political crisis first? And is there any pathway other than a fresh mandate and a fresh election which can enable the economy to set on its right path? And I get that you're saying that फंडामेंटली इलेक्शन करके भी अगर यही दो ही गवर्नमेंट आनी और इन दोनों की यही पॉलिसी है तो कुछ मतलब चेंज नहीं होना. But it depends on who you talk from a PTI point of view, क्योंकि अगर आप उनकी actual policy थी within the first 3 years before Shaukat Tareen came, it was the opposite of Dar. It was correcting for the sins of Dar. आपने डॉलर को artificially manipulate नहीं किया था, आपने devaluation करी, आपने significant pain bear किया, अपनी political cost pay करी, but you tried to do at least the right things from a stabilization and adjustment point of view. But is there any economic pathway out without solving the political crisis first? Didn't PTI sell us Asad Umar for a decade and then 6 महीने में उसको नौकरी से निकाल के पीपीपी का फाइनेंस मिनिस्टर और वो किसने निकाला और की इसकी डिमांड थी, वो भी फिर रिकॉर्ड का हिस्सा है ना कि वो पिंडी से डिमांड पिंडी नहीं वो बोला था by the way, but anyways. So but see Bilal, to your question, Dr. Ali Hasnain has been running a good thread on this, covering the 90s reforms in India. Mm-hmm. And if you read about the 90s reforms in India, you realize that a lot of the plans were actually written in the late 80s. Yes. So the plans were ready, right? They were not waiting for political stability. In fact, Dr. Irfan Nuruddin ki zabardasti kitab hai, yahan kahin padhi hogi, on coalition politics, and his research is very clear that coalition governments, not strong governments, actually lead to more policy stability and reform across the world, including in places like India and Brazil. So this argument to me that a strong government with a strong mandate is the pathway to reform is a bit flawed in the Pakistani context for two key reasons. One, this research that I pointed out. Two, there is no plan. राइट एक तो होता है ना कि आपके पास ब्लूप्रिंट ऑफ रिफॉर्म्स, अच्छा भाई व्हीट की मार्केट को रिफॉर्म करना है या पावर की मार्केट को रिफॉर्म करना है. यू सीन दिस इन द यूएस इन 2020 व्हेन बाइडेन केम, the initial thrust of the plans were already in place and were in Congress on day 2, right, of them coming into power. So neither party has that level of planning. Neither party has an economic think tank that can actually credibly sit with you and I or Shehzad and say कि भाई ये 3-point agenda है हमारा, right, in terms of real reform that needs to be pushed through parliament, right? Because you're in government, your goal is to legislatively and policy-wise push. Even to your point about what Khan did in the early years of his government, see, stabilizing the economy is only saying that the patient is in ICU and I'm going to just make sure they don't die, which is market exchange rates, IMF programs, all of that. But the next step of it, which is the reform element, what did we see? We saw nothing. What did we get? We got the longest ever amnesty scheme in history of Pakistan, right? So the problem here is that, to me, it's less about political stability and a strong government and more about कि भाई blueprint क्या है इस चीज का, right? And you see this in the 90s project in India, that the blueprint was there. आपने slow liberalization करनी है, certain sectors को जो है open up करना है, FDI promote. I think Miftah talked about this at a conference, and I'll stop after this point. Last week he gave a talk and he said this very interesting point. He's like कि हम कह देते हैं कि आपने turf ले लिया
अब आप मशीनरी मंगवा लें और आप फैक्ट्री लगाएं। अब भाई जब फैक्ट्री लगा दी, अब उस फैक्ट्री के लिए बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, वो काम नहीं हुआ, तो वो जो मशीनरी लगी है वो तो सड़ेगी, वहां रस्ट गैदर करेगी, क्योंकि बाकी चीजें इनपुट्स नहीं है। तो यू डोंट हैव एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन पाकिस्तान। द प्लानिंग मिनिस्ट्री राइट नाउ, प्लानिंग डिविजन has, I think, one chief economist, and that chief economist who was recently appointed is the man who gave a ridiculous figure back in the last PMLN government ke pata nahi kitne paise CPEC se aayenge through toll transit, did not materialize, but he's back as chief economist of the planning ministry. So when you don't have a plan, doesn't matter whether there's stability or not. Acha, ye plan, sorry, I think एक पे quick question and then you can ask the question as I can answer later, but whose responsibility is it to develop that plan? I know in technically it should be political parties, but why can't economists working in Pakistan, Ali Hasnain Vagaira, why can't we develop this plan and at least have it ready so that when a political party, when we can change political incentives for political parties to actually follow these plans, the plans at least are ready. ये एक बाद में answer कर देना, but I want the plan to be ready. I think आप लोग सारे जो economists हैं ना, आप लोग जब डिस्कस करते हैं, आप लोग क्लास पढ़ाने के लिए चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल मसलों के बगैर इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती। इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है पॉलिटिक्स को सर्व करने के लिए। सो यस, द नंबर्स डोंट मेक सेंस, आप वो नंबर्स डिस्कस कर लें। जिस तरह आईपीपीज को सभी गालियां देते हैं, बट आपके पास ऑप्शन क्या था? इवन व्हेन आतिफ मियां केम ऑन द पॉडकास्ट एंड ही सेड द नंबर्स जस्ट डोंट मेक सेंस। आपने जो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, दे जस्ट डोंट मेक सेंस। आप हायर इंटरेस्ट डॉलर पे कैसे कर सकते हैं? देन आई वाज लाइक, वाज एनीबॉडी एल्स पेइंग गिविंग अस मनी? ही सेड नो, बोट्सवाना भी आपको पैसे नहीं दे रहा था। तो क्या करते? एक जब पीएमएलएन गवर्नमेंट में आई और आपकी लोड शेडिंग, इफ यू गाइस रिमेंबर, 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा जाती थी, और आप कह रहे हैं जी इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री फंडामेंटल इकोनॉमिक कैसे करें? एंड इधर आई आल्सो डिफेंड पीटीआई। मतलब हमने पीटीआई को बहुत गालियां दी कि उन्होंने एक एटम बॉम्ब फ्यूल सब्सिडी के नाम पर इकोनॉमी पे लगा दिया, लेकिन फंडामेंटल हम सबको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखना चाहिए। द एस्टैब्लिशमेंट इनकरेजेस शॉर्ट टर्मिज्म। आप पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई को जितनी गालियां दे दें कि जी फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं करते, वो कैसे करेंगे? 2008 में जब जरदारी गवर्नमेंट में आए, हर साल ताहिरुल कादरी आके बोलते थे 3 बजे आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने फारिग कर दिए। वो कहाँ से फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म करें? ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी चल रहा था। फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, 2013 से 14-15 तक धरने होते रहे। उनको ये नहीं पता कि 6 बजे के बाद हमारी गवर्नमेंट रह रही है या नहीं रह रही। 2018 इज प्रॉब्ली द ओनली टाइम वेयर गवर्नमेंट केम इन एंड सेड हम तो 10 साल के लिए आ रहे हैं। सो दिस आइडिया कि जी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इनेप्ट हैं, नहीं। आप लोगों के दोस्त भी इकोनॉमिस्ट हैं, आप लोग वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो लोग भी पढ़ते हैं। इट्स नॉट दैट दे डोंट नो व्हाट द फंडामेंटल इश्यूज आर एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू फिक्स इट, राइट? एंड इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल वाली भी आई फील लाइक इज अ वेरी डिसइनजेन्युअस डिबेट। देयर इज नो मिफ्ता इस्माइल विदाउट इसाक डार। ये पीएमएलएन को शुरू से पता था कि मिफ्ता इस्माइल आएंगे, जो आईएमएफ की चीजें हैं वो करेंगे, गालियां खाएंगे, एंड देन हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बिकॉज हमने वोट्स भी लेने हैं जाकर, एज वेर कमिंग क्लोज टू द इलेक्शन, इसाक डार विल कम एंड गिव अ पब्लिक परसेप्शन कि हम कौम का सोच रहे हैं। हाय, नवाज शरीफ मीटिंग से उठ के चले गए, उनके दिल में इतना दर्द हुआ। आई डोंट थिंक देयर इज अ फंडामेंटल स्किज्म इन द पार्टी वेयर मिफ्ता इस्माइल इज बीइंग थ्रोन अंडर द बस। आई थिंक मिफ्ता इस्माइल वाज ऑन बोर्ड, दे हैड दिस डिस्कशन कि आप ये मुश्किल चीजें कर लें, उसके बाद जो पॉलिटिकली कैपिटल गेन करने के लिए अच्छी चीजें होंगी वो इसाक डार से करवा लेंगे। In the current circumstances, if both of you were advising PMLN, you would 100% be like fundamental economic reform छोड़ें, 1 साल में हम क्या क्या कर सकते हैं, because आपके पास है ये 1 साल। So when आप political governments को ये नहीं पता होता कि हम 6 बजे तक हमारी गवर्नमेंट रहेगी, they will always favor short-termism. It's not simply saying वो पैसे लेके भाग जाएंगे, नहीं। even अगर अच्छे लोग भी हों, वो short-termism favor करेंगे because आपने system इस तरह का बनाया हुआ है। इंडिया में एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता है कि वो 5 साल आएगी। But see, this is the flaw in that response, right? So that I'm glad you ended with India, because Narasimha Rao ki jo government thi was one of the weakest coalition governments India ever had, and in fact Manmohan Singh and Rao did not know if they were going to survive this push to liberalize. They didn't have a threat of a military coup at least, right? Bhai, I know, but again, Dr. Nuruddin jab meri podcast bhai, he also concluded with this, that I was like, so is your research relevant to Pakistan? He was like, yes, but you also have to think about the role your military plays in all of this, which is a very on point thing to say. But you also have to then also argue that within the political parties, which political party today, right, mainstream, top 3, PPP, PTI, PMLN,
you can point to and say that they actually have even a research capability on the econ side that is like best in the country, at least forget about best in class globally. There are people you can recruit, but even that type of rigorous internal work does not happen in our political parties, and that again we should critique that and argue अभी वो जो कि आतिफ मियां और आसिम ख्वाजा वाला ग्रुप बना था, मतलब उसमें कौन नहीं था? इकोनॉमिक एडवाइजर वो तो again नहीं, but see there's a difference there. Again, you're talking about something totally different. You're talking about a National Economic Advisory Council, which is part of the government function and the government machinery, and it should exist. I'm not saying it shouldn't. But in most political parties around the world, right, you have an internal party econ research and policy wing, right? So if you look at the BJP, you look at the Congress, you look at the Democrats, you look at the Republicans, either internally within their party or usually more sophisticated in the US, for example, is their own think tanks, whether it's Heritage of AEI or New America Foundation, etc. They all pay for and recruit and keep people of these policy-making communities to build those plans out. We don't have that. And yes, whether it's a chicken and egg problem, PMLN has it. It's just you don't agree with their conclusions, क्योंकि वो but they're not policy experts. नहीं, they're not economists. यार कौन है उस group के अंदर? Independent economist कौन है उस group के अंदर जिसको हम कह सकें कि ये जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जानते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी को जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं? नो, पीपल लाइक मुसद्दिक मलिक, yes, they're part of that think tank. Miftah used to be part of that, but they are not credible research-oriented policy/econ folks, right? Let's be honest. This is different from capability. You cannot get away from that. आप pause हो गए थे. No, I was just saying political parties have to invest in that, and they can't get away with it no longer. It's not possible. But so this is but also, एक second, Bilal, if I may conclude, you know, so I did the podcast with Atif Mia, and Atif Mia का fundamental thesis था कि in unproductive पाकिस्तान इसलिए क्योंकि real estate sector जो है वो इतना incentivize करता है कि कोई पागल है पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाएगा जब उसको पता है मैं बहरिया टाउन में 6 प्लॉट ले लूं, ठीक है? सो देन द कंक्लूजन इज रियल एस्टेट रिफॉर्म होने चाहिए. आप दुनिया के सारे टॉप इकोनॉमिस्ट लेके रियल एस्टेट रिफॉर्म बनाकर किस तरह करना है 10 ईयर का प्लान बनाकर ले आए पाकिस्तान में. कौन नहीं होने देगा रियल एस्टेट रिफॉर्म उज़ैर पाकिस्तान? फौज नहीं होने देगी. मैंने आपकी हाउ डू वी हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट रिफॉर्म विदाउट नहीं, लेकिन एक स्टेप बैक ले लो ना. एक स्टेप बैक. No, it's not. You have to take a step back on this as well. The step back is that I agree that the likelihood of pushing that through parliament or through the Karachi assembly, because this is now a provincial topic, by the way, as well. So the likelihood of that happening is obviously going to be limited for the reasons that we just discussed, aka DHA and Malik Riaz and etc. But I would at least still put the onus on the political parties across the board who say that this reform should happen to show me the roadmap के भाई ये 4 चीजें हमने करनी है और ये इस तरह होगी, इस एक्ट में ये अमेंडमेंट होगी, इस एक्ट के अंदर ये हम FBR को पावर देंगे, हम लोकल अथॉरिटी बनाएंगे, हम एक लोकल KMCs को एम्पावर करेंगे. Again, you at least have to do the rigorous policy intellectual work to get to the end state if that door opens. But if the door closed है, I understand. लेकिन आपने उसका इंतजार तो नहीं करना ना दरवाजा खुलने का. 30 ट्रेडर पे मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर होकर टैक्स नहीं लगा सकता. आप कह रहे हैं क्योंकि मरियम की ट्वीट आ गई, मिफ्ता साहब प्लीज टेक नोटिस. पता है ना वो इकोनॉमिक उसके वो क्या है, वो इकोनॉमिक उस पॉलिटिकल उसके फैक्टर्स क्या हैं. दिस व्हाई मरियम की ट्वीट आई ना. सो वो 30 बीजेपी ने कैसे लगा दिया जीएसटी? आप बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल. बीजेपी ने इंडिया में जीएसटी कैसे लगा दिया? बीजेपी ने जीएसटी रिफॉर्म कैसे कर दिया इंडिया में, हालांकि उसका कोर वोटर जो है वो ट्रेडर है. You can take politically difficult decisions when you know you can have a 5-year plan when you know you have 5 years. You want a 10-year plan for people who don't know कि 5 बजे के बाद हमारी गवर्नमेंट है या नहीं. I agree with that, but I'm saying last point on this, I think we have to sort of agree that at some point you can say that yes, the door for reform is closed. So even Musharraf couldn't do tax reform on the retail side, even though he was a dictator, for the same political compulsions. But at some point you also have to say कि भाई framework तो तैयार करो. इंडिया का जो framework 90s का था, as I said, वो 80s में late 70s में बनना शुरू हो गया था. उस वक्त दरवाजा बंद था.
No one, License Raj was like very strong, and nobody in India, you told Indians, and you can read this in history books, when you said कि भाई Hindu rate of growth hai, which was the term given to it, this is a problem where, you know, dealing with crises, no one wanted to open that door. But when the door opened in 1990, the plans at least were ready. हमारा तो plans ही नहीं है यार, मतलब that's a fundamental problem. 4 academics को बिठाओ. Even when we call academics, we come up with bullshit like single national curriculum. I don't think Pakistan has an economic problem. I think Pakistan has a political problem. Bilal. चलो मैं और शहजाद किसी बात पे agree कर रहे हैं. That's really good. हाँ, लेकिन solution आपका ये है कि election करा के PTI को ले आओ. नहीं, अभी solution के ऊपर मैं आता हूँ, but एक चीज उज़ैर, one part that I want to add a little bit of pressure on economists like you. जब मैं Washington आया था, जिस रात Trump, and I'm not an economist. I know. I'm not. I know. But you're also a man, which you should be ashamed. जिस दिन Trump भी गिर रहा था, उस दिन I remember having coffee with you when I was in DC, and I said कि you know, this work, जो planning वाली बात है ना, अभी political incentives नहीं है, to Shehzad's point, where the political parties can construct this. But I think the academic and economic community can begin to at least put the frameworks of those plans together, so that happens in the next 5 years or so that when the political incentives get better for political parties to start actually implementing that, we don't waste these 5 years. So ek side I agree. So can I quickly respond to that? So this is actually something I've been trying to push as part of the futures of the Pakistan economy. And the goal is exactly to do that at the Atlantic Council, right? And I'll tell you the problem even with that. Doing this, nobody's going to do anything for free, and we shouldn't expect people to give their time for free. It costs money, it costs resources, and you have to bring people together. It's a months-long process. And I've been trying to fundraise, and there is no money. Nobody in Pakistan, even from big businessmen and capitalists, to say they're not interested. They don't have the vision. They don't have the vision. I'm telling you out of experience doing this for the last year. Like I can send you the plan, right, to raise this initiative and do this thinking. But they're literally, when I have this conversation with business leaders, I had this in Pakistan when I was just there. Their eyes just glaze over. They were like, "Isse kya hoga?" And I'm like, "Bhaijan, we need to at least do the bare minimum that we can do." And darwaza jab khulega. Limited resources वाला decision है ना. It's the same thing with floods के जब आपके पास weather forecast आती है और बोलती है 1% chance है इतनी बारिश हो जाए, and you're like 99% chance है कि अगर नहीं हुई तो मुझे अपनी रिसोर्सेज इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए. यू टेक अ पॉलिटिकल डिसीजन. आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान में मैं एज अ पॉलिटिशियन बैठा हूँ, मुझे कोई बोले हम थिंक टैंक बनाएंगे रियल एस्टेट रिफॉर्म पे, आई एम लाइक ये कभी होगा ही नहीं. पॉलिटिशियन की बात थोड़ी कर रहा हूँ. बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इट्स गुड फॉर देम लॉन्ग टर्म. व्हाई वुड मी हु हैज let's say I'm controlling the resources of Pakistan, knowing the political realities, वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज में करवा लूं, चलें आप लोग सारे मिलकर बता दें रियल एस्टेट रिफॉर्म क्या होना चाहिए, बट ऑन द ग्राउंड एक नॉन यूटिलिटी टैक्स नहीं लगा सकता मिफ्ता. So why would I spend millions of dollars in an academic exercise? हाँ, शहजाद आर्गुमेंट is कि अगर तुम मियां मंशा से जाके पैसे मांगने वाले हो for long term financing and he can just give a phone call to Mariam, he's just going to give a phone call. That's the problem. I mean, that vision isn't there, right? No, but that vision, even Khan Saab, you can call Bajwa Saab as well. But no, the vision is lacking. And I've seen this doing work in India. I've seen this doing work in Pakistan. When you have this type of a conversation with Indian business houses, even in the early 90s, when I talked to people, they had a longer term vision. Now, whether this is linked to politics in Pakistan, whether it's linked to rent seeking, I don't know. It could be whatever motivations there are, but this is a fundamental gap. Like, for example, Shehzad, you talked about real estate tax reform, right? Real estate tax reform actually for a capitalist is a gold mine. If you unlock this and do it in the right way, there will be a surge in real estate investment trusts and formalized finance for real estate. That's a lot of money on the table. Right. So if they're not even willing to do that, now I don't know whether this is a psychological thing, whether they're okay being sharks in a small pond, whether they're happy with rent seeking, whether it's political instability, whatever that might be. But at some level, the onus has to be on Pakistan's elites, not just politicians, business leaders, especially, to think
10-15 years into the future and think about what this economy could be. And my experience has been they're not even willing to entertain that thought at this point in time. यही पूरी आतिफ मियां के साथ डिस्कशन थी, where आतिफ मियां said कि भाई ये 6 इंच का पिज्जा है and they want 5.99 inches of that. इनको ये समझाना कि भाई अगर 12 इंच का कर दें और उसका आप 10 इंच भी ले लें तो आपके अंदर फिर भी ज्यादा जाएगा, बट कम से कम गरीबों के पास जो 0.01 इंच आ रहा है वो उनके पास 2 इंच आ जाएगा. बट ये इनको समझाना, which is what the Adanis and the Ambanis in India and the Tatas and the Birlas and the Munjals and all figured out in India. Achha, speaking of inches, let's talk about the fundamental problem जो शहजाद जो आप बात कर रहे हो कि the actual problem is in our politics and it's with the boys. और उज़ैर, ये थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान लॉन्ग टर्म शॉर्ट-टर्मिज्म, here also I agree with शहजाद के I think it's not like the Indian businessman. आज सूरज कहाँ से निकला है? I'm like, it's not like the Indian businessman is somehow more enlightened या वो कोई vegetables खाते हैं तो their brains are somehow more open. वकार यूनुस की एनालॉजी तुमने रिवर्स कर दी कि हम बीफ खाते हैं तो फास्ट बॉलर, तो वेजिटेबल्स खाते हैं तो बिजनेसमैन अच्छे हैं. ये फ्रिंज PTI फ्रिंज बिलाल is racist against Indians. It's political incentives, right, that determine कि businessman की कितनी long term thinking है, short term thinking. तो अगर हम political incentives पे आए और boys को push back करने पे आए, which is the fundamental challenge of Pakistan, how do we break the deadlock in politics over there? And I have a very partisan opinion on this, but I will put this out there. But I'm curious to hear how you guys... I want to debate your partisanship because anti-establishment वाला मेरा बड़ा clip चल रहा है वो वाला. Let me मैंने last time बोला था. मुझे पता है ना तुम्हारा partisanship क्या है, but मुझे तुम उसका जवाब दो. Don't you feel like 2008 to 2018 मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, boys थोड़े recede हो गए थे और थोड़े democratic प्रिंसिपल्स पाकिस्तान में आ रहे थे, एक सिविलियन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था और उसको रिवर्स करना, और वो जब सबने देख लिया नवाज शरीफ के खिलाफ शैम केस एक बना था इकामा के ऊपर, डोंट यू फील लाइक बॉयज का उधर इंटरफियर करना पाकिस्तान के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली भले आप बोल लें गलत था? ठीक है, अब हम आज के ऊपर आ सकते हैं. मैंने कितनी बार गलत बोल चुका हूं उसको. I don't know how many times you want to hear it from me. I think next time एक शर्ट पहन के आ जाऊंगा कि the boys were wrong to interfere. लेकिन हम क्या आज की डिबेट कर सकते हैं? So my point is कि okay, अब हमने accept कर लिया कि boys are the key problem. At this particular moment of the three mainstream political parties, PMLN, PPP, PTI, only one is in direct confrontation with the army right now. The other two are in a coalition. No, they're not, bro. हमने already establish कर लिया कि वो बातें कर रहे हैं. What direct confrontation? My God, शहबाज गिल को क्या torture heavy कर रहा है? मतलब the army is just having fun with. नहीं, एक second. Let me add some nuance to this, Bilal, because I don't think the PTI is in direct confrontation with the army. It is in direct confrontation with Bajwa and his core group of generals. And tomorrow, if there was a Faiz Hamid as chief of army staff, there would be no confrontation. मुझे ये समझ नहीं आती कि इस academic faculty lounge में civilian supremacy का क्या premise है? अगर आप बाजवा के खिलाफ stand लेके civilian supremacy क्या? नहीं, बाजवा के खिलाफ personal उसके stand है ना कि मुझे क्यों निकाला? तो establish होगी कि आप. He's not against establishment. Let me point one more. For just, I don't know if the two of you have read this, but Saroop Ijaz, I think 3 weeks ago, wrote a brilliant essay in Dawn on exactly this point that you're making, Bilal, on civilian supremacy versus democracy and civilians versus Democrats. It's an amazing essay. I can post it in the chat, or Shehzad, I can share it with you after this, and you can post it in the description. But everyone should read it because he breaks down this exact point that what is going on in Khan's argument right now that is there is not for. It is for civilian supremacy because he is the civilian. It's not for furthering of democratic norms because he does not fundamentally, this is Saroop's argument, he does not fundamentally believe in that. And so what you're basically seeing a pushback from the PTI at this point in time is, in a way, my interpretation of that essay was that in a way you're seeing the pushback of replacing one form of authoritarianism with another, which is Khan at the top. And that's what we're beginning to see in Pakistan at this point. There's no democracy here. But Bilal, आप ऐसे बात करें जैसे 3.5 साल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. सेम पेज, जुडिशरी पे जिस तरह के फैसले आए, जिस तरह हर डिपार्टमेंट में एजेंसीज गई, नादरा तक हेड सारे वो कर रहे हैं. सबको पता है कि खान साहब बिल्कुल
कौन से डिपार्टमेंट्स को हाथ भी नहीं लगाते थे, कौन कंट्रोल करते थे। हाइब्रिड रिजीम हुई, अब आप कह रहे हैं वो सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ खड़े में, जब वो गवर्नमेंट में थे he did everything possible to destroy civilian supremacy. ये आपकी select, or you're lagging a little bit Shehzad, just lagging for you, but Shehzad, ये आपकी एक selective recollection of history है। उन्होंने जहां स्टैंड लेना था उन्होंने स्टैंड लिया भी। उस्मान बुजदार के ऊपर रुल गई आर्मी के भाई इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, क्यों नहीं स्टैंड निकाला लिया ये उसको। बताओ ना, क्यों? for civilian supremacy, for his politics, भाई that's a political आपने decision. आपकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि वो जो आर्मी कह रहे थे वो ब्लैंक करके वो हाँ कह रहे थे। दिस इज एन एंडेमिक इशू No, इन I am saying he And I was, think हाँ दिस इज हाँ एन कहना तो दूर तुम की दोनों बात, एक सेकंड, टाइम फिलहाल एक आउट, सेकंड, नो 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 नो, हाँ कहना तो दूर की बात, वो कर भी नहीं रहे थे, हो ही खुद रहा था। अमेरिका, आपको भाई लगता है खान साहब वो ऑर्डिनेंसेस बना रहे थे, अमेरिका जितने के ऑर्डिनेंसेस अंदर कभी नहीं पास हुए। भाई आप आ जाए ना उसके ऊपर। सो बेसिकली आईएसआई की चीफ के ऊपर द सेकंड होलीएस्ट अपॉइंटमेंट इन द लैंड, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने इंटरव्यूज ले फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। अमेरिका के लिए जब अफगानिस्तान से वो विड्रॉ कर रहे थे और जब उनको सपोर्ट चाहिए था तब उन्होंने एक स्टैंड लिया, तब उन्होंने आर्मी वाज रेडी टू बेंड ओवर। और अब बाय द वे यू नो थिंग्स आर बिगिनिंग टू बिकम फनी अगेन। लेकिन इमरान खान के टाइम में देयर वाज अ क्लियर एंड प्रिंसिपल स्टैंड। मैं लैग हो रहा हूं या शहजाद लैग हो रहा है? नहीं बट अच्छा चले बिलाल, हम ये आर्ग्यू करते There were रहेंगे, places बट where he ओके took a वी विल stand. आर्ग्यू। आप एग्जांपल्स देंगे, मैं दूंगा। खान साहब ने खुद बोला है, उनसे पूछा भाई किसने किया ये, मैं तो किया ही नहीं, ये बिल कहाँ से है, हमें तो पता ही नहीं था। जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट में मेरे पास कुछ पावर नहीं थी, आप उसके अगेंस्ट कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं? व्हेन खान साहब himself has acknowledged that all the ills that happened while he was in power was not done by him and was done by the agencies. He is on record saying these things, Bilal. The context of that argument is anti-army and anti-establishment. Matlab, the context of that argument is what he's saying is that they need to stop interfering. Matlab, the So then why context did of he those not stop when arguments, it was happening? काजी फैजी के खिलाफ क्यों रेफरेंस भेजा? क्यों वो सारे बिल्स पास किए जो वो कहते हैं मैंने which he किया has ही नहीं? now accepted, which I had said at that point in time was a mistake, and he is now accepted is a mistake. And by the way, it's a mistake against Faiz. जो आप Faiz को कह रहे हैं ना कि ये Faiz का in bed है, that was a shot at him because वो Faiz और ईसा की लड़ाई है ना, and he is basically taking Isa's side on that. मतलब the amount of मतलब वो pretzels in the argument of Imran Khan is like a puppet. मतलब आपने बाजवा ने खुद भी लम्स में आके बोला था, तब तो मैं भी हंस गया था कि if you think Imran Khan listens to me, you have no idea who Khan साहब is. मतलब तब जब आप उसको, अगर आप उसकी मतलब speeches, मतलब it's bizarre to me that a human So here's so let me interject. we can't even hear each other. मतलब there is basically enough evidence now, at least in the two main parties, PMLN and PTI, of a vocal and strong anti-establishment wing. We can agree on that. Now, whether that wing is just there because to negotiate a better deal or not, again, those are nuances, and we've had this debate on and on in this podcast and before. My problem again with this is, okay, what are you going to do about it? Because the solution being proposed by either side, for example, PMLN का नवाज साहब का वोट को इज्जत दो का नारा, या PTI का जो है क्या न्यूट्रल्स के बारे में जो अटैक्स आ रहे हैं, all of that is again going back to the econ conversation we're having, is outside of any plan. In countries, for example, in Indonesia, if you look at it, or you look at Argentina or Chile, where the military was pushed back, there's an entire academic line of thought called security sector reform, right? Where is the blueprint for security sector reform in Pakistan? There is none. It is just basically saying that the prime minister should basically get to do what he or she wants, and this is the end all be all, which is the problem, right? You talk about something like bugging the prime minister's office and all sorts of leaks coming out. Well, where is the accountability blueprint for that? There is none, because it's not in the interest of either party to do it, because they're both seeking deals at this point in time. So yes, there is a recognition that the establishment needs to be pushed back. But again, I think it is a very hollow recognition from my point of view, because the very hard work of pushing it back has to be legislation, has to be things that set new norms. And whether it is Imran Khan or Shehbaz Sharif or Nawaz Sharif or Maryam or whoever else, none of them, I think, have done the rigorous work of even understanding how to roll that back. Right? And I'll just give you one last example on that, going back again to the PTI. I would have loved to see Khan Saab say,
I am firing Mr. Bajwa. Now the PTI responses हम करने लगे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गया. नहीं भाई, ये 1 महीने पहले 2 महीने पहले की कहानी थी. आपने लास्ट दिन बस एक नैरेटिव करने के लिए सारा काम किया. आप नहीं कर सके ना, आप डर गए, या आपकी अंदर एक विंग था जो कह रहा था आप ये करें, और आपने दूसरी विंग की सी जो मुफाहमत पसंद था. So the question for me ends up being across the political aisle, and this is because Bilal, you're here in your PTI, is what evidence do we have right now that says जो मुफाहमत पसंद पार्ट है आपकी पार्टी और उसकी सीनियर लीडरशिप का, वो कल पावर में आके फिर मुफाहमत नहीं करेगी? Exactly, and मैं इसी का जवाब देना चाह रहा हूँ. So I think the best shot for civilian supremacy right now is if PTI supporters like me loudly argue that Imran Khan should not cut a deal with Bajwa or whoever the next chief is, even though I think Bajwa is going to get an extension. He needs to continue to hold his ground and not do a deal. And PTI voters need to speak out loudly. And they are, by the way, within the system and internally, that constituency needs to be strengthened. And those who are not PTI supporters like Shehzad and Uzair need to argue that at this moment, because PDM is already in government, in coalition government with the army, they need to support the PTI to be able to take a stand right now against the boys and say, do not cut a deal, because PDM already has, right? So PDM, you already know that they were out, they were supporting civilian supremacy, but then as soon as they got a deal, they got back in. We cannot let PTI make the same mistake. Me as a PTI supporter needs to make sure that that doesn't happen internally within PTI, but PTI also needs political cover by neutrals like you guys to say कि अभी moment है, अभी stand ले लो, do not cut this deal, go and hold your ground. And I know that I'm gaslighting all of history for the last 10 years. 100%. But this is the moment that we stand in. And at this moment, there's no other option. And I wish that the Uzair option was a possibility, which is that there was an actual plan versus just आप PTI की कम्युनिटी में आप मुझे सीधा जवाब दें, यस या नो में. कल को खान बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई, वो बनकर आते हैं, वो फैज हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं. आप इसी पॉडकास्ट पे एक्नॉलेज कर चुके हैं कि 2018 इलेक्शंस जो हैं वो फैज हमीद वाज इन्वॉल्वड इन rigging it for Imran Khan. Will PTI supporters of rigging के हमारे ऊपर disagreement है, but yes, there was. Will PTI supporters stand against Imran Khan if he appoints Faiz Hamid as chief of army staff? Yes or no? Will they oppose if he appoints Faiz Hamid as chief of army staff? I think that is not the right question. There would be, did Imran Khan cut a deal to come into power or not? But मैं आपसे आप कह रहे हैं भाई civilian supremacy के लिए हम खड़े होंगे. वो जो civilian supremacy के against इनका track record है. I agree with Bilal on this. The first question is power में आया कैसे? पहले वो question ये कि वो power deal के साथ आ रहा है, वो नहीं आ रहा. अगर वो deal लेके आ रहा है, अगर वो deal करता है, and he's coming to power without करते हैं कि deal के बगैर कोई भी नहीं आया history में. खान एक अकेला होगा. That's the difference, right? That's what I'm arguing. कि अभी this is the moment where I want Khan to only focus on coming through an election and through an elected mandate. I want him to get 2/3, but even if he gets 51%, I'll take it. But the point is that that's how I want him to come to power. And that's what I want to be the voice within the party to get there. If he can do that, he can appoint whichever army chief he likes. I don't care. But if he is coming through a deal, I will oppose him. And I would argue that that's the difference, at least in my blue-eyed way, that's the difference between a PMLN supporter and a PTI supporter. Although to PMLN's credit, to PMLN supporters' credit, they are beginning to read through this. There's a big internal disenchantment. PMLN has seen a big decline in its support since the vote was. And I think PTI will also. If Imran Khan cuts a deal, PTI will lose a significant amount of support. Because now the anti-establishment voter is an anti-establishment voter. They are not a PMLN voter or a PTI voter. They will go after whichever party is anti-establishment. And that, I think, is one of the most beautiful things that's happened in Pakistan over the last 5 years. बिलाल आप पाकिस्तान में रहते नहीं है, इसलिए आप शयान टाइप बातें कर रहे हैं. आई जेन्युइनली फील लाइक कि पिछली पॉडकास्ट पे आपको शायद पीटीआई सर्कल्स में बुरा भला कहा है, गालियां पड़ी और वो आपने दिल में ले लिया है. आप भी वही ट्रोल्स वाली बातें करना शुरू हो गए हैं. मैं कुछ भी बोलता हूं तो आप उसका जवाब देते हैं कि यू आर बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, यू आर रनिंग इन प्रेट्जल्स, यू आर हिस्टोरिकली, इसका कोई वो नहीं है, दिस इज सो रिडिकुलस दिस आर्गुमेंट. ये जो पर्सनल अटैक्स हैं, ये यू आर साउंडिंग लाइक an average PTI supporter as opposed to what we expect from these podcasts. But Uzair को भागना है.
मैंने रिपीट भी किया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, द आइडिया दैट इमरान खान इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट इज रिडिकुलस। तस्वीरें खिंचाने के लिए ही कम से कम मुदस्सिर नारू के बेटे के साथ मरियम नवाज ने तस्वीरें खिंचवा ली थी, वो कम से कम बलोच कॉज, एक आपको सरदार अख्तर मेंगल पीडीएम के स्टेज पे नजर आ गए थे, मोहसिन दावर उनके साथ नजर आ गए थे, भले सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए मिसिंग पर्सन मिसिंग हो गया ना, कुछ भी नहीं हुआ। एंटी एस्टैब्लिशमेंट सबसे सेंट्रल वो क्या है, इट्स द बलोच कॉज। मीर जाफर, साइलेंस, आर्मी चीफ को मीर जाफर कहने से बड़े एब्सोल्यूट साइलेंस पीटीआई की तरफ से, एंड अगेन ऑफ कोर्स पीडीएम की तरफ से। ये तो इनको एक अग्रीमेंट में होगा, गवर्नमेंट में आना है, बलोच कॉज में होगा। सो इज ही अगेंस्ट द रोल ऑफ द आर्मी in politics? No, he just wants them to rig the elections for himself. That's what he's asking for, that's what he's consistently asked for, that's what he's defended while being in power. पीटीएम पे गोलियां चलती हैं, खान साहब खामोश होते हैं ना, वो कम से कम आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, आप जो बाकी लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ ही खड़े हो जाए ना, आप औरत मार्च पे आ जाएं, आप पीटीएम की रैली पर आ जाएं, आप बलोच कॉज पे आ जाएं, आप हजारस के साथ खड़े हो जाएं, जो लोग एक्चुअली एंटी, आप लेफ्ट को अपने साथ ले लें, ठीक है। अगेन ऑप्टिक्स, बकवास ऑप्टिक्स, हमारे लिए जान के घर पे तो जाते हैं ना बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, सिर्फ तस्वीरों के लिए। खान साहब वो भी नहीं करता, खान वो भी अपने से गवारा नहीं समझता। एंटी एस्टैब्लिशमेंट द पब्लिक जो लेफ्ट 60 सालों में नहीं कर सकी, 6 महीने में करा है। आपने ऑडियो लीक्स नहीं सुनी, उसने हजारों लोगों को निकाला है। पीडीएम की रैलीज भी इतनी बड़ी थी बिलाल, पीडीएम की रैलीज एग्जैक्टली इतनी बड़ी थी, एग्जैक्टली इतनी बड़ी थी पीडीएम की रैली। 60 साल से इधर की एंटी एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हाट वाज पीडीएम डूइंग राइट बिफोर खान, महीने में करके दिया है। व्हाट वाज पीडीएम डूइंग? द एग्जैक्ट सेम थिंग। पीडीएम ने एग्जैक्ट ये जो नारे, पीडीएम ने इस स्केल पे नहीं कर पाई है जो स्केल पे पीटीआई किया ने था, करा है। इसी पीडीएम की रैली इतनी बड़ी थी। I know you're gonna laugh at this, but PTI ने बर्गर्स को निकाला है, पंजाबी privileged class को और ऑडियो लीक किया है कि हम इनको only फीड way करेंगे। Pakistan will change is when the privileged elite begins to change, and that is what Imran Khan is beginning to do. You don't realize the शयान का प्रोटेस्ट करना इमरान खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये सारे जो आप पीटीआई के ट्रोल्स कहते हैं, जो आईएसपीआर को एम्पलीफाई करते थे 5th जनरेशन वॉरफेयर में, वो अब 5th जनरेशन वॉरफेयर को अटैक कर रहे हैं। आईएसपीआर की बोलती बंद कर दी है। कल को वो जब खान को सिलेक्ट कर लेंगे वो वापस आ जाएंगे। This is what is happening. So that's what I'm trying to tell you. You think Bilal, these people will be anti-establishment when Imran Khan is in power? No, they only care about one man. They don't care about how Imran Khan comes to power. Imran Khan's path to power is through an election. That's the difference. Has to run. So we'll give him the last point. As Khan said in his audio, किसी भी हरबे के थ्रू हम आ जाएं, अगर खान किसी भी हरबे के थ्रू आ गया, PTI supporters, zero anti-establishment, zero principles, they only care about that one guy. That's it. We will watch. It's different this time. Final word. I mean, see, the thing is, at some level, I agree with what both of you said, right? Shehzad, your point that Khan just wants power and people around him, inner circle, want power. Jaise bhi, the audio leaks obviously give us an insight into their thinking. But you cannot deny what Bilal said, that there is, and look, this is a very young country. 24 is the median age. The majority of the country is under 25. And a significant majority is under 30. So these people were not born, they were born after Pakistan became a nuclear power. So we cannot deny that there has been an overall awakening. What Nawaz Sharif sort of built through the Vote Ko Izzat Do campaign, he sort of plowed the ground, and PTI or Khan Sahab has, in a way, in whatever way or shape or form, has sort of added the seeds and the fertilizer to this. And I agree with Bilal that what will happen, and we will find out in the next 6 months, 8 months or so, where this thing goes. But regardless, I feel that what will happen is that Khan will strike a deal to come back into power. The establishment will, the house always wins in Pakistan. That's the tragedy of our history. But as a result of that, I think what you will see is that across the 2 or 3 parties, there will be an even bigger voice. Whether that remains in these parties or not, we will see. I hope it doesn't, to Bilal's point, because it has to be a different movement, a 3rd or 4th movement, so to speak, for civilian and democratic rights and constitutional rights in Pakistan. But you will see this constituency begin to grow. And I think that is evident. Like, I heard this on the street when I was in Pakistan. There is a soft awakening in terms of that. And whether that continues to grow and whether that leads to the type of things that
you and I, and maybe even Bilal to an extent, would like to see. And I think he would like to see in strengthening of constitutional norms and power. That's to be seen, but you cannot deny that there is a shift in attitudes, and that is the only, to me, that's the only sort of like ray of hope in an otherwise very terrible is there a political growing economy. anti-establishment trend and feelings in Pakistan? 100% बिल्कुल. बट ये भी जो एक आइडिया है ना, खान ने यूथ को अवेकन कर दिया है कि यार जो खान की फंडामेंटल थीसिस है वही गलत है, कि नवाज शरीफ जरदारी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, करप्शन पाकिस्तान का प्रॉब्लम है. What he's telling them, like he said in the audio, कि ये fertile ground है, इनको spoon feed करो. He has dumbed down a generation. अच्छा बिलाल, आप कह रहे हैं जी खान साहब सपोर्ट लूज करेगा. तैमूर झागरा और शौकत तरीन की कॉल लीक हुई. पाकिस्तान जब 1/3 अंडर वाटर है, हमें डेस्परेटली पैसे चाहिए, और ये लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इमरान खान को इंसल्ट हुआ है इसलिए हम IMF का वो पैसे रोक देंगे, लोग यहाँ भूखे मर जाएं, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे चला जाए, लेकिन पॉलिटिक्स हमारी अच्छी हो. Did PTI lose zero support over that, or do you disagree with the way I framed the Jhagra Tareen phone call? So, अगर आप सुन लो पीटीआई के सपोर्टर की आवाज जो हर बार आपकी पॉडकास्ट में आती है, बट फिर भी वो भी नहीं ब्रेक थ्रू कर पा रहा कि क्यों पीटीआई का सपोर्टर, क्यों इमरान खान टेफ्लॉन खान है, क्यों उसका सपोर्टर डिस्पाइट एवरीथिंग दैट यू थ्रो एट माय फेस, व्हाई डू आई स्टिल से दैट आई स्टिल सपोर्ट हिम. ये वाली बात एक सुनो ना, कि दैट इज I have answers, but I'm going to restrain myself. बट मैं दो क्विक आर्गुमेंट्स स्क्रैप करता हूं कि while नवाज शरीफ एंड जरदारी are not the totality of Pakistan's problems, they are a big part of Pakistan's problems along with the establishment. So your narrative as an independent guy is the army is the sole issue, biggest issue in Pakistan. PTI's supporter says, today's PTI supporter says that it is the army in collaboration with Sharif and Zardari, because in sabka mukmuka hai, right? And they're all playing musical chairs. So the PTI voter is against all of it from a status और quo. उस मुक्के में, sorry for a quick interjection, उस मुक्के में आपकी पार्टी का वजीर आजम का कैंडिडेट वो शाह महमूद कुरैशी and Parvez Elahi. So and that is the Sheikh Rashid extent, for years. that is the extent of the anger and the middle finger that the Pakistani public, that the PTI voter or supporter wants to give to the anti. It's like that. अब ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट होगी, so maybe we need to another podcast on this, but it's like the Trump voter. ठीक है, ट्रम्प वोटर की एक legitimate economic grievance है, और फिर उनकी एक fringe political identity वो भी है, which all metastasizes and comes out. But जब आप उनकी सारी economic grievance को आप gaslight कर देते हैं, saying you're all racist and you're all fascist, तो आप उस डिबेट को शट कर देते हैं, and you do not allow a legitimate discourse with their legitimate grievances. So PTI वोटर की भी कुछ legitimate grievances हैं, और अब thankfully they are now directing their anger at the establishment as well, and that is a very positive thing, and we should support it at least in this moment. कि अगर वो कर रहे हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो आ रहे हैं, और अगर मैं कह रहा हूँ कि as a PTI voter I don't want them to cut a deal, every PTI voter that I'm talking to, people who've been personally harassed, people whose houses have been raided, people who know those people, social media की team PTI is under, like beats के अंदर they were moving from homes to homes, and this is like a broad community of people. The way that they're communicating, ये anger जो है वो एक मिनट में dissipate नहीं हो जाएगा अगर आपने PTI के साथ वो आर्मी के साथ deal cut कर ली. This anger is here to stay. It is genuine. It is real. And we should all support it, regardless of our political point of view, because this is our only hope in this year, in the next 6 months, 12 months to further. अगर ये आप जो लोगों की बात कर रहे हैं ना, जब 6 महीने के बाद खान साहब सेम पेज पे होंगे, इन सब लोगों को आप देख लीजिएगा, एंड 6 पॉडकास्ट पे बिलाल आकर आप जो कहना है कह चुके हैं, and then yet you like victim in every situation. Somehow Imran Khan plays the victim. 6 पॉडकास्ट पे आके सारी बातें कर चुके हैं, and you're like, आप हम सबको फैशिस्ट समझते हैं, हमें गैसलाइट कर रहे हैं. मेरी अब लेटेस्ट कंक्लूजन ये है, एनी टाइम somebody uses gaslight in an argument, they've already lost. I mean, if I thought you had nothing worthwhile to say, you wouldn't be on this podcast. So please, ये जो personal attacks और victimhood है ना, इससे बाहर आके solutions, I feel like आज हमने solution oriented बात नहीं की. Thankfully Uzair was here to bring us to some solutions. This is why नायाब बाजवा टाइप होते हैं तो लोग जरा कटे हो जाते हैं. Please feedback दीजिएगा. I feel like आज हम ज़्यादा constructive बातें नहीं कर सके. So sorry about that. Thank you so much Uzair. Thank you so much Bilal. Uzair, you have to run. कुछ कहना है जाने से पहले? नहीं, I'm good. Thank you. चलो, bye Uzair. Bilal, since आपको लगता है हम आपको बोलने नहीं देते, Uzair जा रहे हैं, मैं आपको दे देता हूँ लास्ट वर्ड. जो कहना है कह लें, फिर मत बोलिएगा मुझे बोलने नहीं देते, हमें फैशिस्ट समझते हैं, हाय अल्लाह हम बेचारे, हमें गैसलाइट किया जा रहा है, हम तो इतने एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं. हाँ जी.
नहीं, आई थिंक कि जो मुझे जो मुझे दिल में जो द हर्ट इज कि डिस्पाइट टॉकिंग फॉर दिस लॉन्ग आई फील लाइक कि I understand your point of view. I don't agree with it, but I understand your point of view. But I feel like कि जो PTI वाली side है, that you are looking through the lens of your current and existing opinions, and I want, जिस तरह I Again, have personal changed and attacks. accepted things. Again, मतलब, and it's not by the way personal. This is more, and maybe it's become personal because I'm taking the entire projecting my anger at everybody on the other side and taking it out on you. So to that extent, I that's not the purpose of it, but the idea it's is not fair that either. we should open our hearts and say कि, okay, what did we change our opinion on today? So how, देखो ना, something to but that बिलाल, effect, the what did point we is, change जब our आप opinion कहते on? हो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना, पाकिस्तान में पीटीआई सपोर्टर होना है, do you not realize the million holes in that argument? But I didn't make that argument. What I'm But that's saying what is you're कि the saying, कि PTI अगर आप supporter एंटी today. एस्टैब्लिशमेंट हो, न्यूट्रल should also support PTI right now. No, so let me the argument that I was making is that the PTI supporter today is an anti-establishment voter. I did not say that the only anti-establishment voice today is PTI. There's a I difference would, between the the two. PTI supporter today is a pro Imran Khan voter, wherever Imran Khan is. कल को वो अगर गुन गाएं एस्टैब्लिशमेंट के और वो वापस उनके फ्रंटमैन बन जाएं, हाँ, तो वो पीटीआई सपोर्टर वहां लेकिन चला इसमें दो जाएगा. चीजें ना. आपकी जो ये एक तो आप ये आर्गुमेंट भी है कि मानने वो के लिए नहीं, वो तैयार नहीं इमरान है, खान को गालियां देंगे अगर उन्होंने ये किया, नो एविडेंस फॉर दैट. लेकिन आई थिंक कि दो चीजें ना. एक तो आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आजकल इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट है. बिल्कुल आप नहीं हूँ. मतलब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो फैक्ट्स ही नहीं है, मैं क्यों मानूं? अगर वो आर्मी चीफ को मीर जाफर और जानवर कह रहा है, नहीं इतना कहा ना मेन उसने, स्ट्रीम नाम कहाँ पॉलिटिकल लिया? पार्टी कम वाले, से कम नवाज शरीफ को आप क्रेडिट दें, उन्होंने 2 लोगों के नाम तो लिए ना. उन्होंने नाम लेके उसके बाद नवाज शरीफ ने डील काट के वापस गवर्नमेंट आ गए नवाज उन्हीं नामों शरीफ के ने देखा साथ. है, बट हाँ, शहबाज शरीफ ने, ये बिल्कुल. तो नवाज, ये भी एक आपने, अगर आप कह रहे हैं मिफ्ता और डार में कोई फर्क नहीं है, तो नवाज हाँ शरीफ और हाँ, शहबाज नहीं शरीफ नहीं, में वो तो कोई आई फर्क एग्री, नहीं है. वो तो आई डोंट बट डिसएग्री. अगर आप, सो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इमरान खान जो है, जो आप लेफ्टिस्ट की भी जो आपने बात करी कि आई एग्री विद यू कि जो ओरिजिनल अलम्बरदार्स ऑफ civilian supremacy in Pakistan are the leftists, are Is there PTM. I anybody think they on are. the left who I supports PTI? क्या चीज? Is there any prominent नहीं, leftist activist, political they're leader who not right supports now. Imran Khan or They're believes that not. Imran Khan is anti-establishment? तो जो They're लोग not. anti-establishment के By the way, अलमबरदार हैं, हमारे अली जान ने जब पीटीआई के खिलाफ तशद्दुद हो रहा था स्टेट के बिहाफ पे अभी, मैंने भी और जब किया था. शहबाज गिल के साथ भी हुआ था, तो हमारे अली जान ने सपोर्ट किया था मैंने उस भी, केस मैं में. पीटीआई को भाई नहीं वो सपोर्ट. देखो, वो तो हाँ, वो जो गलत यास्मीन चीज थी राशिद तो की उसको गाड़ी पे सपोर्ट हुआ गोलियां, था, डंडे मारेंगे आप लोगों के तो वो घरों में तवार रात ने को सपोर्ट किया जाएंगे, था. वो तो हम भी तो वो गालियां क्यों देंगे हो ना. रहा था? हाँ, वो तो हम भी ये गालियां बात देंगे है ना ना कि यार. हाँ, लेकिन जहां मुझे गुस्सा आता है शहजाद, वो ये है कि अगर आप उसको कंडेम कर सकते हो कि यास्मीन राशिद बिल्कुल को कर वो सकते हैं. हो रहा था और शहबाज गिल को ही हो रहा था, लेकिन आप फिर ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि ये क्यों हो रहा था उनके साथ, फिर क्योंकि वो आप एंटी बट ये क्यों नहीं एस्टैब्लिशमेंट एक्सेप्ट बातें कर करते रहे थे ना. आपके, जब जर्नलिस्ट कहते हैं कि पीटीआई के दौर में जो फैशिज्म उन्होंने फेस किया वो कभी हिस्ट्री में नहीं किया, आप ये नहीं एक्सेप्ट करते ना. फिर आप कहते हो मैं इस कि फैशिज्म हुआ ही पीटीआई के खिलाफ है और पीटीआई जन्नती है. नहीं, मैं नहीं भाई, ये नहीं कह यास्मीन रहा. राशिद पे मैं ये जब नहीं गोले, कह रहा. वो भी गलत था. सारा बयानिया, जब एहसन इकबाल के खिलाफ ब्लास्फेमी कैंपेन करके गोलियां चलाई, एहसन इकबाल वाज शॉट एट, वेयर वाज द पीटीआई सपोर्टर देयर, वो राइट? गलत था. इमरान खान ने उस वक्त भी उस चीज को कंडेम किया था. मैं आपको यही तो बात समझा रहा हूँ ना कि आप जाके देख लो. was Imran Khan not part of the blasphemy campaign against PMLN? वो Was Imran चीज Khan not वो being like ये TLP बिल्कुल सही कर रही है? वो चीज गलत थी. ये चीज एंडेमिक है. ब्लास्फेमी प्रॉब्लम इज नॉट अ पॉलिटिकल और अ पार्टिजन इशू. इट इज अ सिस्टेमिक पाकिस्तानी इशू. व्हेन यू Who यूज ran सिस्टेमिक in the पाकिस्तानी past, इश्यूज in the past एंड मेक 5 देम years, पार्टिजन, in the you past do. 5 years, which political party has ran a blasphemy campaign against another political party apart from PTI, out of the 3 top ones? भाई पीएमएलएन ने भी ये इसी किस्म के स्टेटमेंट्स इमरान खान के खिलाफ और बीबी बुशरा के खिलाफ भी पास किए हैं ऑन किस तरह ब्लास्फेमी. के, बाय द वे, किस चार्जिंग तरह ऑन के ब्लास्फेमी. भाई? वो टीएलपी के साथ मिलकर उन्होंने कैंपेन चलाई, सड़कों पे प्रोटेस्ट किए, ये बताओ ना. भाई आप वो मतलब तो खान साहब ने ये भी बोल दिया था कि जी मुझे वोट नहीं करेंगे, वो Shehzad, if शिर्क you है. are making blasphemy a partisan issue, it's not. I'm not going to. मतलब it's not. ठीक है. Anything that anything blasphemy. that we talk about PTI, Maryam वो Safdar's मैं तो बोल रहा हूँ, husband is who's the not biggest saying that? bigot.
It's not part. What I'm trying to say is I'm it's saying, across but the political spectrum. I agree So with I you, agree but- with you. I but agree when with you that PTI weaponized it. I Sir, agree with you but that PTI बिलाल, weaponized it. आप But what I'm जब trying to जुनैद say सफदर is और इमरान खान सेम बातें करते हैं, why do इमरान you खान say नहीं जुनैद बातें सफदर is a करता है। bigot but Imran Khan's not? Why do इमरान you fall खान short of ने that? भाई इमरान खान ने जो मतलब अगर आपको एक बंदे का रिकॉर्ड देखना है, अगर आप उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप ये देखें कि जुनैद ने जिंदगी में क्या किया, और आप ये देखें कि इमरान खान ने माइनॉरिटी, उसने ही मैरिड अ फ्रिकिंग जू, मतलब लाइक ही इज नॉट, So he आई has एम the नॉट सेइंग आई right हैव अ to वाइट be a फ्रेंड, bigot because he मतलब married a उसने Jew. सिक्स के लिए गुरुद्वारा खोला while द करतारपुर किसने एंटायर खोला है बिलाल, आपको भी हैपनिंग पता है, मुझे भी पता है. एंड ओके I mean, it's अच्छा good ठीक that it happened. I credit it's good करतारपुर. that it happened. It's good that happened in the government that it happened. But anyways, I think हमने जो ये पॉडकास्ट शुरू की थी कि हम अक्रॉस द आयल बात करेंगे, I think it's we worsened, generated. maybe it just shows the polarization that's worsened in the past few months, but आप भी, मुझे लगता है कि लोगों के फीडबैक के बाद ना, जो आप शुरू में कंसीड कर रहे थे और कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही थी, वो नहीं, आपने आज भी करना मैंने छोड़ दिया. कंसीड बात करी, जहां where PTI is wrong, I conceded. But what I'm angry by is that there is no recognition of the value that PTI is bringing to the political system, what it is arguing in this moment for an election, what it is, the anti-establishment stance that it's taking. मतलब the point is कि I give, जो आपका primary thrust of the argument था कि leftist जो हैं वो तब से कर रहे हैं, PTM उधर से कर रही है, I agree with you all of that. लेकिन what I want you to give recognition and acknowledgement for is कि PTI is a mainstream political party that has so much popularity and awareness. When it becomes in this pathway, it adds fuel to the same fire that leftist and that PTM and all of them were arguing for in terms of an anti-establishment Did you sentiment. give और ये PDM? पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है. Do you agree Was that that- PDM started this? PTM, I think yes, PMLN laid the ground for this. Do you give them credit for that? Yes, तब तो obviously. आप मैंने उनके आर्टिकल अगेंस्ट में थे भी कि लिखा हुआ है PTI गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने जो एंटी आर्मी स्टांस लिया और जो फर्टाइल ग्राउंड डेवलप किया, खून फीड उसी करने के लिए. उसी प्रिसाइसली बाय द वे. और इमरान खान, मतलब आई नो कि आप उसको एक उस कॉन्टेक्स्ट में द स्पून फीड लुक्स बैड, मतलब अगर आप मेरी और आपकी भी एक पॉडकास्ट की कॉन्वर्सेशन का एक सेंटेंस उठा लें, आप उसको डिकंटेक्चुअलाइज करके वो कर सकते हैं. बट आई एग्री कि ये जो आप, अच्छा चलें, छोड़, आपने अब इल्जाम लगा दिया, पे मैंने डिकंटेक्चुअलाइज किया है, आप मुझे कॉन्टेक्स्ट में वो बता दें, स्टेटमेंट किस तरह, मैं कैसे मतलब गलत फ्रेम कर रहा हूँ, मुझे ये बता दें. इट्स वेरी इजी टू से, नहीं ये कॉन्टेक्स्ट देखें आप, दिखा दें बिलाल कॉन्टेक्स्ट मुझे. इसका कॉन्टेक्स्ट मेरे लिहाज से जो कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि द पाकिस्तानी पब्लिक finally has an anti-establishment sentiment that is strong enough where Imran Khan and sort of the PTI sort of folks can I hate the word spoon feed, but can take the public and can mobilize the public in a direction where we can have real change when it comes to the structures of our political incentives. हम boys को finally in a meaningful way push कर सकते हैं. 5 लोग मैंने खरीद लिए हैं, 5 और खरीद लो, कोई भी हर बार लगा लो, कुछ गलत सही नहीं है. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका मुझे कॉन्टेक्स्ट ऑनेस्टली पता नहीं है, and if it is about horse trading it's very sad, but I think कि जब पीटीआई हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ लॉ लेके आ रही थी, तब पीडीएम को नहीं उसको अपोज करना चाहिए था, तब उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए था, एंड वंस एंड फॉर ऑल हॉर्स ट्रेडिंग को एंड कर देना चाहिए था. और इसी तो खान साहब का 5 एमएनएस खरीदना हलाल है? नहीं, उन्होंने खरीदे नहीं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बच जाती है अगर वो खरीद नहीं, वो 10 खरीदते तो बच जाती ना. उन्होंने बोला 5 खरीद लिए, 5 और चाहिए. हाँ, बट किसी एक भी बंदे ने, 5 तो छोड़े, किसी एक भी बंदे ने पीटीआई को वोट नहीं दिया आउटसाइड ऑफ इट्स पार्टी. बट पीटीआई वालों ने तो दिया ना, वो तो अपनी पार्टी में इल्जाम दे रहे हैं ना, अपने पार्टी में थोड़ी खरीदेंगे बंदे. तो इमरान खान यही इल्जाम दे रहे थे ना कि हमारे पार्टी के मेंबर्स खरीदे गए हैं. हाँ, जो सारा हॉर्स ट्रेडिंग का मलबा था कि हमारे बंदे खरीदे जा रहे हैं, and then eventually nobody from PTI voted, so again that's based on a complete falsehood. Wow. अच्छा, हाँ, but the allies were enough to de-seat the government and that's what happened. जो सारा narrative था कि हमारे बंदे खरीद रहे हैं, वो तो झूठ था ना, because उनके बंदे थोड़ी खरीदे गए. I am pretty sure that they were being offered and they were being asked so to now, break. So you can't have it both ways. So if you agree that their people were being so you're offered, saying that then they you bought agree back. that, yeah, so they bought people. So then अपनी horse trading की ना उन्होंने. You're not
Okay. दोनों मतलब, चीजें नहीं हो I think सकता, दोनों नहीं हो if they सकता. bought their own people, if they bought their own people, I mean, I don't know what to say to that argument. If they bought their own people to vote for themselves in a, if that's the argument, okay, if the proof comes of it, bad on Imran Khan, shouldn't have done it. But in the grander scheme of politicking in Pakistan, if you told your own party members to vote for you in a vote of no confidence, I don't. Fool me once, shame on me. Fool me twice. Sorry, मैं उल्टा बोल दिया. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me 500 times, I am Bilal Lakhani, a PTI supporter. यकीन मान लेते हैं हम लोग आपकी बातों पर कि खान साहब बदल चुके हैं और अब वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं. वो जो सब उन्होंने किया था जो गलत था 3.5 साल में, अब वो नहीं करेंगे. अब वो सही तरीके से हर चीज चलाएंगे. I think what people don't realize is what I said when PDM was happening, कि शिकायत ये नहीं है कि ये क्यों selected है, शिकायत ये है कि हम क्यों नहीं है selected. पाकिस्तान में ये आप तब नहीं कहते थे, ये आप तब कहते थे कि ये सिविलियन सुप्रीमेसी की लड़ाई है. निकाल लो मेरा ट्वीट, निकाल लो मेरी पॉडकास्ट. हम इसमें निकालने की कुछ कोशिश करेंगे, but the essential argument at that point in time was कि Imran Khan needs to go because he's fascist and we need to bring PDM to bring back. आप मेरी निकाल लें, मेरा But I'd be very overjoyed if you said. मुझे पता था कि वो डील के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे, लेकिन मैं ज्यादा खुल के उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए नहीं आता because the original sin is 2018, it's not 2022. So if your idea is डील करके पावर में आना गलत है तो 2018 गलत है. 2022 और मेरे लिए ओरिजिनल सिन अब 2022 बन चुका है, तो दोनों अपनी हिस्ट्री की चेरी पिक करें. देखो तो आप 1988 पे चले जाएं. नहीं, व्हाट बिलाल, ये अनफेयर, ये स्ट्रॉ मैनिंग बस कर दो. What the system is trying to do with exonerating Maryam and Nawaz is trying to go back with 2018. आप establishment को जितनी भी गालियां दे दें, establishment की एक realization है कि 2018 गलत था और हम 2018 कम से कम रिस्टोर कर दें. उसमें पूरा मुल्क बर्बाद हो गया है. खत्म कर सकते हैं. What's factual is there's a quid pro quo. What's factual is there's a quid pro quo. There's a narrative that they're correcting the sins. But do you think the establishment really learned its lesson? Okay, so what is Shehbaz Sharif not correcting for its sins? They don't even accept their sins. What is Shehbaz Sharif giving to the establishment that Imran Khan was refusing? Yeah, Shehbaz Sharif is giving everything that they wanted. So basically, what did Khan not give? उनको एक IMF के साथ डील चाहिए थी at all costs. उनको एक एक्सटेंशन चाहिए जो शहबाज शरीफ उनको देंगे. उनको एक एक्सटेंशन चाहिए जो शहबाज शरीफ देंगे. उनको ये नहीं चाहिए था कि कोई बंदा आके ISI के चीफ को क्वेश्चन करे कि हमारा कौन बंदा जो है वो उधर लगेगा. उनको चाहिए था कि अमेरिका के साथ जो भी हमें डील चाहिए आर्मी वो करे. उनको चाहिए था इंडिया के साथ पीस हम चाहते हैं तो आप इमरान खान बैक ऑफ. इमरान खान stood on those cases. फिर तो सवाल है कि इमरान खान को निकाला क्यों ना. कुछ तो कहीं तो उसने पख डाली होगी ना कि उसको निकाला. वरना 2018 में जो आप बात कर रहे हैं कि इतना परफेक्ट था सब कुछ, दोनों की शादी इतनी अच्छी थी, तो फिर क्यों निकाला उसको. कुछ करा होगा ना, कहीं तो खड़ा होगा ना वो, जिस वजह से उसको निकाला है. the schism जो सेम पेज फटा था वो ISI की हेड की अपॉइंटमेंट पे फटा था. वो आप कह रहे हैं खान साहब खड़ा हुआ ना अच्छे, वो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उनको अपना बंदा चाहिए था. एंड फैज हमीद he was using to politically control people that he has acknowledged, that his allies have acknowledged. मतलब ये तो is not up for debate anymore ना, that he was using Faiz Hamid to run his government. Do you disagree with that? I think like any political government, Imran Khan आप हर चीज पे बोलते हैं बाकी सब भी ऐसे हैं. You don't say कि ये गलत है. You don't stand for a principle. You just say बाकी भी यही करते हैं. But do you acknowledge that he was using Faiz Hamid to run his government? I think that was a part of it. He abused all. And he wanted Faiz Hamid in power to continue doing that. भी आप वही वाली बात है ना कि ISI को पॉलिटिकल किसने बनाया था हिस्टोरिकली. आप उस चीज को मिस कर रहे हो. आप ये नहीं देख रहे कि बिलावल एडम एंड ईव की गलती है कि ऐसे ISI को वेपनाइज किया है, and how they continue to do it, and how this Shehbaz Sharif government came in and said कि अब हाँ सारे political appointees अब ISI की वेटिंग के बाद आएंगे. पहले भी हो रहे थे. So ये जो है ना, this is going nowhere. We need Uzair Younus to intervene and give solutions. क्योंकि हम दोनों से फटा करते रहते हैं. What people need to realize is कि आप हिस्ट्री पढ़ें, किताबें पढ़ें, and you will realize that people's movement
always has been used to put pressure on the establishment, whether that be the lawyers movement, which had a lot more organic components. शुजा नवाज की मेरे ख्याल से किताब में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ और एतजाज हसन गाड़ी में बैठे हुए थे, वो जब तक भेरा पहुंचे थे तो उनको फोन कॉल आ गया था और एस्टैब्लिशमेंट बोला था कि हमने ड्रोन से देख लिया है, यू हैव इनफ पीपल, व्हाट यू वांट यू विल गेट। सिंपली पुट, पीटीआई जितने भी बड़े जलसे हों, इतने लोग नहीं आए कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन कर ले। अगर वाकई इतने लोग आ जाते तो वो वापस इंटरवीन कर लेते। एंड जिस तरह ऑडियो लीक में भी पता चला है, people are used in Pakistan, whether that be PDM, PPP, PMLN, PTI, people are used to put pressure on the establishment. People are not used for a people's revolution. People's movements होती हैं, औरत मार्च, PTM, इस तरह की, वरना जो आपकी बड़ी political parties हैं, they use you to put pressure on the establishment. यार मैं उससे agree करता हूँ, लेकिन बिल्कुल PTM और औरत मार्च are not translating into political forces that can actually change policy or आप एक मतलब तरफ उसको translate into political power. Ultimately आप कहते हो कि all issues are political, तो आपको you have to translate that into political power. Imran Khan is taking one of their agendas, which is civilian supremacy, and translating that into a political manifesto. And why didn't he do that when he had the power? Why didn't he do all of these things when he had the power? Why didn't he strengthen civilian supremacy when he was in power? Why did he not? इसके ऊपर एक आर्टिकल भेजूंगा, ये जो मैंने लिखा था। अच्छा बस कर दो यार, लोगों को जाने दो खुदा के वास्ते। 20 मिनट पहले अफगानिस्तान पे अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ये क्या था? मतलब दिस वाज नॉट, क्या किया उसने सऊदी अरेबिया में? इंडिया के साथ जब आपको तब पीस करना था कश्मीर के बाद, तब होल्डिंग इज ऑन, लाइक ये क्या था? ये सिविलियन सुप्रीमेसी का ही एक्सप्रेशन था। What he did with India was that he signed the paper as commerce minister. हमाद अजहर की जो 6 घंटे में छुट्टी की थी, पब्लिक ब्लोबैक आया, and as prime minister he rejected the summary that he signed himself as commerce minister. And this you see as him taking a stand against the army. मैं क्या बोलूं बिलाल, मतलब ये क्या चेरी पिकिंग हो रही है खुदा के वास्ते। चलो, let's do this, let's continue this debate with Uzair, and I also want Mustafa and Nayab, वरना ये वो शो हो जाता है, इसलिए मुझे आज जरा ज्यादा अग्रेसिवली पीडीएम की साइड लेनी पड़ी, क्योंकि कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। बट it's weird to see you become more of an Imran Khan supporter over these past few months. So clearly जो आप कहते हैं कि उनका मंजन सब रियलाइज करते हैं कि झूठ है, वो कहीं ना कहीं मंजन तो बिक रहा है ना। आप जो कहते हैं कि वो अमेरिकन वाला जो था वो भी झूठ था, लेटर भी झूठ था, लेकिन वो बिक गया ना मंजन, बिक तो गया। The question is why? The question is why? Spoon feed, ये राइप हैं। So आप assume as कि the पूरी audio डम है। leaks, I want to conclude, बस कर दे, लोग ट्यून आउट हो चुके हैं 20 मिनट पहले, लोग उज़ैर यूनुस को सुनने के लिए ये पॉडकास्ट सुनते हैं। Like Khan said in his thing as well, कि people pressure डालो, इतने लोग ले आओ ताकि चीजें हमारी तरफ आ जाएं। So yeah, people are being used, PDM used people and they managed to effectively use them to create pressure on the establishment. Now PTI is trying to use people to create pressure on the establishment. इतना तो आ गया है कि डीलें कट हो रही हैं, खान साहब मिल रहे हैं, तो क्या डील कट होती है वो हम देखेंगे। लेकिन बिलाल का आप सारे ट्विटर हैंडल देखें, कल को जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साथ साथ चल रहे होंगे और खान डील करके वो सारी बातों के अगेंस्ट कर रहे होंगे जो आज वो स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पहले किया था और पावर में आके वो सारी चीजें भूल गए थे। होपफुली आप लोग बिलाल को जरूर गालियां देंगे और उस तरह की गालियां देंगे जिस तरह पीटीआई वाले वैसे ही आते रहती हैं, ताकि वैसे ही आते रहते हैं। आई थिंक बिलाल को एक आइडिया हो, वन डे यू शुड एक्सप्रेस एन एंटी पीटीआई ओपिनियन सो दैट यू रियलाइज द नुआंस के पीटीआई सपोर्टर से गालियां आना और नॉर्मल गालियां आने में क्या फर्क है। मुझे आपके उस पे भी कमेंट सेक्शन पे भी आती हैं, इवन फॉर द एनीवेज, एंड यू आर कंपेयरिंग दैट टू व्हाट वी गेट। आई डू एंटी पीटीआई मतलब मैं ट्वीट्स भी करता हूं, आर्टिकल्स भी लिखता हूं, बट वेयर इट्स बस कर दें लोग, अब आप और मैं प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लोग ट्यून आउट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, होप दिस वाज कंस्ट्रक्टिव इन सम वेज और द अदर। इन केस बिलाल को लगा मैंने उसको नहीं बोलने दिया, फाइनल वर्ड ले लो बिलाल। नहीं, आज मैंने काफी अपनी दिल की भड़ास निकाली है, भड़ास ही उतारी, आज कुछ अक्लमंदी की बात नहीं की, आज सिर्फ गुस्सा और भड़ास वाला था। Yeah, but I think we should have Mustafa and Nayab or somebody from the other side. As usual, they vacate the premise, but we'll have them next time. I feel anytime a PTI supporter says, बाकी भी तो ऐसे हैं, they have already lost because the whole idea of PTI was तब्दीली।
नहीं, so क्योंकि आप this सिस्टेमिक defense के इश्यूज को बाकियों को भी तो पार्टिजन देखिए बना ना रहे हैं। आप भाई तो आप अलग हुए सिस्टेमिक थे ना। इश्यूज, आप ब्लास्फेमी और गालियों को एक पार्टिजन इशू बना रहे हैं, जबकि वो पाकिस्तान की एंडेमिक इश्यूज हैं, एंड दैट्स अनफेयर। बट एनीवेज, चलें। if I say TLP has exploited this, will I be being unfair because these issues are systemic? आप एक टीएलपी और पीटीआई का जो कंपैरिजन है, Did PTI मतलब not आई stand with रिजेक्ट इट आउटराइट, TLP बट in the 2017-2018 I campaign? मतलब and Did they PMLN not has stand as together well, against and PMLN? PMLN has as well with TLP। ये एक सिस्टेमिक इशू है, ये एस्टैब्लिशमेंट की Did क्रिएशन PTI है। and TLP ये not stand ये together? TLP एक एस्टैब्लिशमेंट, मतलब like depends on where you, I think we Bilal, should wrap it up। बिलाल आपने बिल्कुल सम अप कर दिया है। आपने बोला टीएलपी एक एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है। सो 2017 और 18 में जब टीएलपी इस्तेमाल की जा रही थी पीएमएलएन के अगेंस्ट, आप खुद कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो पीटीआई उनके साथ खड़ी हुई थी ना। मतलब सो पीटीआई एंड टीएलपी और वो फिर एंड द पीटीआई की गवर्नमेंट में एस्टैब्लिशमेंट पीएमएलएन और टीएलपी साथ आ गए। colluded to bring down a but they did the democratically same thing elected in the government. PTI government, it was PMLN and TLP। मतलब वो पीएमएलएन और बात ये टीएलपी ने क्या किया एक साथ? ये उन्होंने भी साथ, when they क्या? were PDM को जब धरना करना था तब PM क्या नाम है, TLP ने भी उसी वक्त धरना अनाउंस किया। So it was Did they were also PMLN and colluding। TLP collude? Did they do it वो together? साथ वो Did you see PMLN being like बड़े हीरो हैं खादिम रजवी like Imran Khan they did? actually did दिखाओ share a stage also। They कब actually did share a stage also। ये चीज हुई थी, I think in कब 2000 and कोविड के उसके दरमियान हुई थी, जब मैं कोविड की वजह से भी कह रहा था कि ये धरने नहीं करें, तब ये हुआ था। और हाँ, पीपीपी का भी बंदा गया था। सो बेसिकली पीपीपी का प्लीज, ये बंदा मतलब कोई एक रैंडम बंदा यहाँ मतलब हफ्तों तक खान साहब और साथ उन्होंने कैंपेन चलाई एंड यू आर कंपेयरिंग दैट टू पीपीपी का बंदा एक टीएलपी की रैली ठीक पे है, गया था। चलें, let's continue this private debate later। For people who are listening and are very frustrated at this conversation, I feel like nuance is very important, and this is why Bilal comes on, and despite me disagreeing with everything he says, ये conversations होना जरूरी हैं, क्योंकि अक्सर ट्विटर जो है ना वो एक आर्गुमेंट दे देता है, वो दूसरी साइड की nuance या दूसरी साइड जिस नज़र से देख रही है वो नहीं देखता। जिस नज़र से देख रहे हैं वो भी हम शायद एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं, बट कम से कम आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि हम किस नज़र से चीज़ें देख रहे हैं, ताकि एटलीस्ट वो कॉन्टेक्स्ट हो। इट्स नॉट जस्ट दीज हेडलाइंस के इमरान खान इज फैशिस्ट, भाई अब उसको आप हिस्ट्री में जाके देखें। आसिम सज्जाद के साथ हमने पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था, तो शायद वो सुन लें। बट या शॉर्ट ऑफ दीज ट्विटर हेडलाइंस, होपफुली we've managed to give you some more depth, and even if it was frustrating at times and turned into a geo report card, बता दें मुझे, वैसे फीडबैक दें कि डू यू प्रेफर दिस, डू यू पढ़ने पसंद है आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू Bilal, thank you Uzair for being us, and this last half an hour is a good lesson that we should not do this without Uzair। Thank you। Bye bye। Thank you, Shehzad।